My friends, it is our indeed honor and pleasure to receive all the dignitaries for the inaugural session of Social Leadership Development Program. Let's give them a big round of applause and welcome them all. I request all the dignitaries to kindly accept the chairs in the front. Good morning and a very warm welcome to all of you. It is indeed a moment of great pride and significance as we gather for the inaugural session of 4th Social Leadership Development Program 2025 here at the Swami Vivekananda Sabha Mandap of MIT World Peace University. This program is a tribute to the vision of revered Professor Dr. Vishwanath D. Karatsar, who has always believed in nurturing leaders rooted in values, wisdom, and service to society. The SLDP is more than a training initiative. It is a platform that inspires young minds to engage with the deeper purpose of leadership, to serve, to uplift, and to transform society into peaceful and ethical means. As we ring the bell of social leadership in time to come. With today's proceedings, it is only fitting that we invoke the divine blessings of Lord Ganesha, the remover of obstacles and the harbinger of wisdom, clarity, and auspicious beginnings. In the Indian tradition, no important event, be it academic, cultural, or spiritual, commences without a Ganesh Vandana, a devotal invocation to seek his grace. Lord Ganesha, with his serene wisdom and powerful presence, is revered as the patron of learning, intellect, and new ventures. As we embark upon the journey of 4th Social Leadership Development Program, let us open our minds and hearts to his blessings so that this journey of knowledge, transformation unfolds in harmony, success, and peace. Let us experience the divine Ganesh Vandana. I request the team of Ganesh Vandana to kindly proceed.
the team of Ganesh Vandana please proceed? May I request the team of Ganesh Vandana please proceed? सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके मान मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू बल्लौडेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं आकार लेने लगा ख्वाब मेरा साकार होते रुका ख्वाब मेरा मेरे अधूरे कारना सनी निदा दबा कर दे तू पूरे आज सानी दा पानी दा बस छुपा है मोरिया उस पे ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया ऊर्जावासी लाख कोई दे हुंकारे लाख कोई धमकारे हम तेरी राहों पे चलते हम नहीं रुकने वाले
Thank you very much. Let's give them a big round of applause, my friends, once again, for a beautiful representation and invocation of Lord Ganesha. Thank you very much for that. My friends, for an important beginning, SLDP 2025. This entire gathering has 4 set objectives: to instill the core social leadership values among the first-year undergraduate students by fostering empathy, active listening, and deep understanding of community needs; to expose students to real-life social leaders who exemplary ethical decision-making, integrity, and inclusive leadership, inspiring them to develop positive societal change. The third one is to develop students' abilities to apply a multidisciplinary approach in addressing complex societal, economic, and governance challenges through collaboration and systemic thinking. And the fourth objective is to encourage collective action and community engagement by promoting the ethos of community for change as a model for inclusive and sustainable development. My friends, we all are going to be part of this social leadership development program for the next 3 days, beginning with this inaugural session. And now, it is indeed my honor and privilege to request all the dignitaries to approach and gather for a very, very important tradition of this platform, and which is ringing the bell of social leadership. The Indian spiritual tradition, the sounds of bell, is believed to cleanse the environment, awaken the inner self, and invite the divine energies into the space. Today, as we bell this bell of social leadership, it resonates through the sacred hall. It becomes a clarion call to every inspiring youth to raise as a leader. Let's give a big round of applause as we join this inaugural session through ringing this bell of social leadership. Thank you. I now request the dignitaries to join hands for lighting the traditional lamp. It is also yet another important tradition of our country, an age-old Indian ritual that signifies the ushering of light, knowledge, and auspiciousness. In our culture, the flame represents Agni, the eternal energy that purifies and uplifts. As dignitaries light this lamp, we invoke the blessings of Goddess Saraswati, the goddess of wisdom, and Gayatri, the goddess of illumination. Once again, I request all of you to give a big round of applause as the dignitaries have lit the traditional lamp. A big round of applause, my friends. We are present here in number of thousands. A big round of applause, please. Thank you very much. I request all the dignitaries to kindly accept the chairs. My friends, the stage is now all set to begin with the inauguration of Social Leadership Development Program 2025. I'm sure we all are now aware that it is an important tradition of Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University, that we start our day with a prayer
which is a powerful invocation created by revered Professor Dr. Vishwanath Karadkar, the visionary founder of MIT World Peace University and creator of the World Peace Dome. Rooted in Indian spiritual thoughts and ideals of Vasudhaiva Kutumbakam, this prayer transcends the boundaries and calls for peace, harmony, righteousness across the world. My friends, this World Peace Prayer would be followed by national song Vande Mataram. So for both these important events, I request dignitaries on the dais and everyone off the dais to please rise in their seats as we are now going to experience the World Peace Prayer followed by national song Vande Mataram. I request everyone, all the students, please rise in your seats, fold your hands, close your eyes as we seek the blessings of Almighty through World Peace Prayer. वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूचि गणेशु सकलार्थमति प्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you. Can we now have the national song Vande Mataram, please? Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra-jyosna pulakitayamini, Pulla-kusumita drumadala-shobhini, Suhasini, Sumadhura-bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. Thank you very much. And my friends, it is now time that we understand the concept of social leadership development program in details through a small film. I request my technical team to kindly relay. The Social Leadership Development Program, SLDP, is a novel platform established to foster social leadership values
and help inculcate the art of understanding the needs and aspirations of the community. The SLDP is a 3 days mandatory program, part of the first-year graduation students orientation at MIT World Peace University, Pune, Bharat, to sensitize students towards positive change and collective progress. The 3 days program features a unique ensemble of social leaders through various walks of life who have made a resonating impact on communities and environment to inspire for a better tomorrow. These leaders will help inspire our students by setting example through their integrity, ethical decision-making, and a genuine commitment to the greater good. To address societal challenges, promote social justice, and building a more equitable and harmonious world for everyone. Thank you for that film. And now, to kindly propose the welcome address, I would like to invite on stage the Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. R.M. Chitnis. Good morning, all of you. My dear students, good morning, all of you. Say good morning. We will not start the program unless you keep quiet. Announcement of the discipline of MIT in the start itself. Feedback to President of MIT of you yesterday when you were chit-chatting and you walked out of this hall yesterday. On the foundation day, some of you managed to arrange your parents' phone call to our teachers saying that you are hungry. Most frustrating week in the MIT history. August 1, engineering, August 4, management, and August 5, foundation day. It never happened in MIT. Today, we have informed our authorities. It could be me, or it could be dean, it could be professors, it could be administration staff. Will come to you, you have to surrender your iCard. They will click your photograph if you don't have iCard, and you will be out on this particular day. On an average, 1,000 students fail, and 800 plus we remove because of the low attendance. Out of 26,000, which side you want to be, this side or that? You have an army general sitting here who is part of National Security Advisory Board, which operates Operation Sindoor. He has came all the way from Delhi for you. And what is the big deal you are discussing? Are you getting Nobel Prize? Still some students are speaking. All the faculties on the back side, remove them from Pendal, also remove them from the university. Take signature of the authorities and put it to Vice Chancellor's office. I look at the faces of the students who come to our office every day because of some or the other discipline. That time you are weeping. That time you are bringing parents. Come on, you are 18 plus. Manage your own life. This few crore rupees is invested in you, not in me, not in General Saab life. Doesn't help us. It helps all of you. So I want absolute pin drop silence. Put all the cameras in the students, take the pictures and see that they should be out of Pendal and out of MIT University. Whatever connections you have, it could be Putin or Donald Trump, we don't bother. This is the system of MIT. Good morning, all of you. Such a pleasure to see you all on this inaugural session of Social Leadership Development Program. This program is crafted to ignite spark of social responsibility, empathy,
transformative leadership among our students. Now, what is this transformation? As I told on day 1, that is 1st August. On 1st August, I told you the same syllabus is taught in NDA or IIM Ahmedabad or IIT. Similar type of teachers, but discipline is tremendous. In IIM Ahmedabad, college starts at 7:30 a.m., ends at around 11. Around 12 o'clock, you get message that tomorrow 6:30 or 7 o'clock you have examination. Can we do it here in one day? You will not like it, because you have come here for relaxation and what is shown in Bollywood movies. Imagine Fernando Garibe has all the way from US. He is on the way, stuck up in traffic jam. Just Google him. He was here yesterday also. Fernando Garibe is a Grammy Award winner for 3 times, from Lady Gaga to Britney Spears. For everyone, he has written songs and recorded songs. You don't know. You don't know what is Grammy. You don't know who is Fernando Garibe. You don't know what is Operation Sindoor. You don't know even what is NSAB, National Security Advisor. Because of them, we are sitting here quietly and the head is sitting here. That kind of a transformation we are bringing. In National Defense Academy, whose head came here for engineering 1st August orientation program. College starts at 4:30 in the AM. You have to get up at 3:30. College ends at 11:30. If you remain absent or even you speak one word in the lecture, 10 kilometers round of NDA. Can I introduce that? Can we introduce that discipline here? So be self-disciplined. Going further, on behalf of Founder President, UNESCO Chairholder, Dr. Vishwanath Karat sir, on behalf of Dynamic Executive President, Dr. Rahul Vishwanath Karat sir, who is in US, today in Harvard Business School, Boston, and on behalf of all my deans, associate deans, faculty members, head of the departments, it gives me privilege to extend a warm welcome to General A.K. Singh, former Commandant of South Command, which is the 3rd largest command in the world. That means more than 8 lakh soldiers work under me. More than 8 lakh soldiers work under me. Chief of the Army Staff and President of India picked him up as a Board of National Security Advisory, working with Honorable Dohal ji, and you can ask him questions. Prepare yourself. Going further, I also extend hearty welcome in absentia to Grammy Award winner, 3 times Grammy Award winner, Professor Fernando Garibe, who is on the way. Friends, now that you have become a part of this prestigious institution, you are at the threshold of remarkable journey. One that will not only shape your academic and professional path, but also your values, your character, and your contribution to the society. We are living in a time that demands more than just academic excellence. Our world today needs compassion, compassionate leaders, individuals who are not only intelligent, not only skilled, but also socially conscious and ethically grounded. क्या है ये socially conscious, grounded? आप है अभी? You cannot even give respect to the founder president. We have seen yesterday what happened. Transform yourself or you will be behind. You will be behind whom? Right now there are G8. We are in the G8 now. 3rd largest economy right now. We want to be 4th largest. We want to become 3rd largest. So you are competing with whom? Do you think you are competing only with Mumbai, Pune and Delhi people? You are competing with Chinese. You are competing with students from France, from England, from Australia, New Zealand, Germany, America, and Canada. If you look at the system of discipline in these universities, no one speaks. I will tell Dr. Gautam Bapat to show glimpses, if possible, of Salt Lake University. Salt Lake University in United States of America invited Dr. Karat to speak. Our founder president was invited in US. 30,000 students
4 hours program, not a single student opened mobile phone. Everyone shut down. Can I ask you to do that? Will you listen? When Dr. Karadsar's speech got over, all 30,000 students gave standing ovation. My dear students, on an average, any country's students is much lower than you. Take my words, I have traveled because I was also heading many years international collaboration of this university. Any boy or girl sitting here is much brighter than England or America or China or Germany student. You are good in English, you are good in maths, you are good in general knowledge, and you have one degree with you, whatever degree you want to pursue. But then where you go wrong? Over emotional, enjoyment in chit-chatting, dopamine on the mobile, but those guys are hardworking. Lower in IQ than you, lower in intelligent quotient than you, but very high in emotional quotient. A team member. यहाँ पे 60 लोगों का एक ग्रुप होता है फर्स्ट सेमिस्टर में, सेकंड सेमिस्टर में 30 के 2 ग्रुप होते हैं, थर्ड सेमिस्टर में 15 के 4, चौथे सेमिस्टर में 7 के 8 ग्रुप, और बाद में जब आप बाहर जाते हो तो 2 के 30 ग्रुप होते हैं या 1 के 60 ग्रुप है. इंडियन स्टूडेंट कैन नॉट कीप देमसेल्फ टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स. झगड़ा होता है, सोशल मीडिया पे बात होती है. इंग्लैंड अमेरिका में ऐसे होता नहीं. आपसे कम आईक्यू वाले लोग दुनिया में आगे जा रहे हैं क्योंकि वो साथ रहते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, खुद के करियर को प्यार करते हैं. गोइंग फर्दर, वी आर लिविंग इन अ टाइम दैट डिमांड्स नॉट जस्ट एकेडमिक एक्सलेंस, but the social leadership development program is not just series of lectures or workshop. My dear students, under leadership of Dr. Kakandikar sir, it is a platform for you to learn about inclusivity, sustainability, equity, ethical governance, community engagement and service oriented leadership. ये सब आप में आना है. अभी है कुछ इसमें का? मैं अगर पूछूं मैंने अभी क्या बोला वो भी आप रिपीट नहीं कर सकते. Can anyone tell 4 points which I have said just now, few seconds back? I will repeat for you. It's a platform for you to learn about inclusivity, sustainability, equity, ethical governance, community engagement. किससे खाते हैं ये? क्या है? वो आप में कैसे आएगा? ये आपके लिए बना रहे हैं हम. Be serious in MIT or say goodbye to MIT, or we will say goodbye to you. Once again, I am cutting short my particular speech for want of time, but I wanted when General Spab speaks, no one speaks. You ask interesting questions. What is Operation Sindoor? Is it going to happen again? How many kind of a different technologies are we using? We are from engineering. We want to learn technology. Can I have internship with you? Prepare yourself right now. बाजू वाले से बात करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. आपका टाइम जाने वाला है, आपकी एनर्जी जाने वाली है. आप जो फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड में थे, आपके बाजू में जो बैठता था आपका बेस्ट फ्रेंड, कभी उसने अपनी जिंदगी में आपको मदद की है क्या? MIT में एडमिशन मिलने के लिए, जॉब के लिए करेगा क्या? We are in a competitive world, competing with China, competing with Germany, competing with France, competing with England, competing with USA, competing with also other smaller countries. We will be number 1. Not only in India, we will be in world number 1. ऐसे अगर आप ठान लेते हो, रिजॉल्व करते हो, बाजू वाले को आप बोलबे keep quiet, don't speak a single word. I am in this program for which I have paid. Do you do this thing? Go to McDonald's, pay money in advance, ask for 2 burgers, veg burgers, and when order comes, don't be there. Go on the other footpath and make mockery of someone who is preparing burger for you. The same thing you have done from 1, 4 and 5th. I congratulate engineering students and science students because on August 1, the discipline was good. But on August 4th, but my dear engineering science student, when August 4th came, management, MBA, BBA, commerce, public policy, liberal arts, fine arts, all these students, when people were speaking from here, when control of exam was speaking about your examination system, you are going to have a lot of issues.
when you fail or your attendance is not there. He was explaining you what is CGPA and GPA. Do you know what he has spoken? It is about you. हम लोगों को मालूम है. आउटकम बेस्ड सिस्टम, इसके ऊपर पेपर आइडेंटिफाई होता है. व्हाट इज COPO, कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम, आपने कभी किया ही नहीं है, अब ये कंपलसरी है आपको. इसके ऊपर आएगा पेपर. फेल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बाहर जाओगे. And when control of exam was speaking, such an important information was being given, Division 4 MBA, BBA students started clapping in between. You stop. When you fail, will he support you? हमको फेल नहीं होना है, 100% अटेंडेंस चाहिए. मेरा खुद का, खुद से रिजॉल्व कीजिए आज, और मैं यहाँ फर्स्ट आऊँगा MIT में. और जब आप फर्स्ट आएंगे तो बेस्ट ऑफ द प्लेसमेंट मिल जाएगी. जैसे मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नौकरी मीन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट छोकरी, मीन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट चिल्ड्रन, मीन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट करियर. Be serious, you are 18 plus. Say that I will compete with China. I will not even look at smaller countries here and there. With this, best wishes for your 3 days SLDP. Congratulations to our founding president and Dr. Rahul Vishwanath Karad sir for creating these programs for you. I always wonder if when I was in college, I never had access to this kind of a program. But now we are putting efforts on you because you are the asset of our nation. You are Bharat. We will become old one day, but you will run this country. Some of you will go to the army, some of you will go to banks, some of you will go to Larsen and Toubro, some of you will go to Mercedes-Benz. Everywhere we have our students. Phone call away. Just tell where you want placement. They were here, they developed themselves, and they are at the top position. They will help you, but on the recommendation of your teacher. Teacher will recommend you only if you show disciplines, not only intelligence. Emotional quotient plus intelligent quotient plus spiritual quotient only will succeed in this world at the top. Still some students are speaking. I hereby instruct all the faculties and administrative staff, just go near that boy, ask his name, click the picture, and forward it to students department, discipline department, to Dr. Hitesh Joshi, and see that they are out of this. Thank you. This is my job to create discipline. This is my responsibility to make you responsible in your life. Don't take otherwise. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Maratma, Bharat Mata Ki Jai. Thank you, sir. Thank you very much for bringing it to the point that where students at least understand what their responsibilities are and what they should be doing in their life. This is their first few days of the graduation degree program, and it is really important for them to understand. Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir. And as you have rightly indicated in your speech, we would hereby be showing the film of revered Professor Dr. Vishwanath Karad, sir, as indicated by Honorable Vice Chancellor. I request the technical team to kindly relay the film. विश्वधर्मी विश्वनाथ की संकल्प यात्रा महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रामेश्वर रुई से चली विस्मय चकित करने वाली ये संकल्प यात्रा ना जाने कितनी बुलंदियों को छूती हुई ज्ञान भूमि आलंदी से होकर विद्वत नगरी काशी बनारस भारत की उत्तरी सीमा पार बसे देवभूमि बद्रीनाथ के निकट माणा गांव से निकलकर सप्त सागर पार इंग्लैंड और अमेरिका तक पहुंच गई है। इंग्लैंड के विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित किए गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत और इंग्लैंड के समविचारी विद्वान वैज्ञानिक दार्शनिक शिक्षाविदों को मूल्याधिष्ठित वैश्विक शिक्षा पद्धति का अवलंबन करने की डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर की संकल्पना को मूर्त रूप में लाने के लिए प्रेरित किया है। अमेरिका स्थित शिकागो में 130 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रेरणादायी शब्द जिस स्थान से उच्चारित किए थे उसी ऐतिहासिक फुलरटन हॉल के मंच से प्राध्यापक कराड सर ने उपस्थितों को संबोधित कर विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की स्वामी जी द्वारा की गई पहल का स्मरण करवाया। अपने जीवन काल में
प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर द्वारा शिक्षा, विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए तन मन धन समर्पित करके कार्य किया गया है। उनके इस निस्सीम सेवा भाव से प्रभावित होकर अमेरिका के उटा राज्य स्थित ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सल लीडरशिप इस विशेष मानद डॉक्टरेट पदवी से डॉक्टर कराड़ सर को सम्मानित किया गया। Brigham Young University periodically confers degrees on men and women whose service to the world, country, and education is of such significance as to warrant the distinction of an honorary degree. This is the highest honor within the university's authority to grant, and today an honorary degree will be conferred upon a very deserving individual. It is my privilege to represent Brigham Young University with the support of the Board of Trustees in conferring an honorary doctoral degree upon Professor Dr. Vishwanath D. Karad. लगभग 23,000 दर्शकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ ये समारोह इस बात की पुष्टि देता है कि सच्चे मन और समर्पित भावना से किए गए कार्य की सराहना तो विश्व के किसी भी प्रदेश में होती ही है। से अधिक कलाकारों से बने एक सुरीले वाद्य वृंद द्वारा प्राध्यापक कराड़ सर को एक सांगीतिक मानवंदना दी गई, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। अत्यंत साफ सुथरा चरित्र, विजयगिश वृत्ति और समर्पित सेवा भाव इस त्रिवेणी संगम से बनी विश्वधर्मी विश्वनाथ की जीवन यात्रा सभी के लिए आदर्शवत है। आइए विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ सर का सादर अभिनंदन करते हुए उन्हें भविष्य में और अधिक मानव कल्याण के कार्यों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। Thank you very much. I'm sure you would have noticed what Honorable Vice Chancellor Sir was saying. I would like to request my team to rewind the film and show that those 30 seconds where much more number of students than you, probably twice or thrice in size than the number which is present here today. Everyone was sitting and listening to all the speeches with pin drop silence, and when the degree was conferred on revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, everybody was standing and clapping. Just see the discipline, the decorum that those students are maintaining. They are of the same age you are. Why there is a difference between the discipline that they are following and the discipline which is being followed here, and which was the point of Honorable Vice Chancellor sir. Technical team, if you can please see those 30 seconds again, please. इस बात की पुष्टि देता है कि सच्चे मन और समर्पित भावना से किए गए कार्य की सराहना तो Look at the number of students present here. Thank you very much.
So let us try to understand what Honorable Vice Chancellor sir was saying, and let us try to understand the discipline that is very much required. Thank you very much, sir. I would now like to request the Dean of Innovation, Startups and Collaborations at MIT World Peace University, Professor Dr. Ganesh Kakandikar, to kindly give us a brief introduction of Social Leadership Development Program. Good morning, dear friends. Indeed, it is a pleasure to be here as the convener of Social Leadership Development Program successively for the third time. Honorable Guest of Honor, Professor Fernando Garribe, the Chief Guest, Lieutenant General Ajay Kumar Singh, Honorable Vice Chancellor, Honorable Chief Academic Officer, Honorable Chief Operating Officer, Deans, Directors, all my colleagues and dear students. It's both an honor and privilege to stand before you as the convener of Social Leadership Development Program, a groundbreaking initiative envisioned by our esteemed Executive President, respected Dr. Rahul Karad sir. This program, hosted by MIT World Peace University for all first-year undergraduate students, marks a significant step forward in our collective journey towards creating a more socially conscious, empathetic, and responsible generation of leaders. Today, as we gather to inaugurate this novel platform, I am filled with a deep sense of pride and excitement. Pride because we are taking a bold step in fostering social leadership, values amongst our students. Those are future leaders. And excitement because I believe that this program will serve as a catalyst for the transformative change in our society so desperately needs. The Social Leadership Development Program is not just another academic endeavor, it's a call to action. It's a platform designed to help you, future leaders, to develop their skills, attitudes, and values. Those are necessary to make a positive change and impact on the society. So the program aims to inculcate the art of active listening, what Honorable Vice Chancellor was guiding you, the ability to empathize with others, and a deep understanding of needs and aspirations of our communities. These are the qualities that define true social leaders. Honorable Rahul Karad sir, in his visionary wisdom, recognized that social leadership is not about individual charisma or a personal achievement. It's all about fostering inclusivity, promoting collaboration, and creating a shared vision that resonates with the diverse members of any group, community, or society. It is also about embracing a multidisciplinary approach to address the complex challenges we as an India, diverse country with 140 crore plus population is facing and will face in future. It's an embodied by our movement. So we, the change makers, is a powerful force for the transformation of the society. It unites diverse voices, fosters inclusive communities, and champions equity, sustainability, as well as innovation. We the Changemakers is more than just a hashtag or a slogan. It's really a rallying cry, a call for action that inspires individuals to collaborate and drive impactful changes in the society. So as students, you are the future of the country. The education you receive here at MIT World Peace University will equip you with the knowledge and skills necessary to excel in your chosen fields. Whether it would be engineering, management, law, design, commerce, economics, or any another discipline. The coming 3 days, you will listen the life stories of many social leaders, social reformers, change makers, social entrepreneurs. As a convener, I would request you for active listening and to get inspired from those lives. So whatever profession you have chosen along the path when you graduate, you should try to find out solution for some of the social problems. I wish my best of luck for the next 3 days. Thank you very much. Thank you very much, sir, for those words.
And now, as per the tradition of our motherland, I would like to request Honorable Vice Chancellor, sir, to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais. First and foremost, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the guest of honor of today's session, Professor Fernando Gariby. Please put your hands together and welcome the dignitaries on the dais as we welcome and felicitate Professor Fernando Gariby, the guest of honor of this session. A big round of applause once again for Professor Fernando Gariby for coming all the way for this important session. I would now like to request sir to kindly felicitate and welcome Lieutenant General Ajay Kumar Singh Ji, PVSM, AVSM, YSM, SM, VSM and a PhD. The chief guest of today's session, please put your hands together for Lieutenant General Ajay Kumar Singh. My friends, we are also fortunate to have the presence of a very important person, Ron Gunnell, who is present here today. I request him to kindly come on stage and accept the felicitation. My friends, it is my pleasure to share with you that he is the alum of the University of Brigham Young University, which we talked about just now. And he is the Presidential Advisory Board member of Utah Valley University. Let's welcome him with a big round of applause. A big round of applause for all the dignitaries present on stage. Thank you very much for your presence. Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir. I request everyone to kindly accept the chairs. My friends, such platforms are really important, not just for the students in this case, but they are important for strengthening the democratic fabric of our nation. There is one such platform of which I would like to share a few thoughts. The National Legislators Conference, NLC, is one of its kind platform that brings together the members of parliament and legislative assemblies from across India to engage in meaningful dialogue on ethical governance and inclusive development and the future of our democracy. Conceived and founded by Dr. Rahul V. Karad, the Executive President of MIT World Peace University, the NLC aims to rejuvenate the spirit of public service and reinforce the values of transparency, accountability, and public-centric leadership. I request my technical team to kindly relay the film on National Legislators Conference. भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च ग्रंथ है जो सरकार को शासन चलाने की शक्ति देता है। हमारा संविधान हर भारतीय की पहचान है जो सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। हर नागरिक को समान अवसर मिले, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी संवाद बेहद जरूरी है। संवाद से राष्ट्र निर्माण के मूल मंत्र के साथ राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन यानी नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत की स्थापना हुई। आजादी के अमृत काल में एनएलसी भारत का जन्म भारतीय लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुंबई में एनएलसी भारत के प्रथम सम्मेलन का आयोजन 2023 में 15 से 17 जून के बीच हुआ। इस सम्मेलन में अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा विधानसभा के स्पीकर महोदय और एमएलए एमएलसीज ने भाग लिया। पूरे प्लेटफॉर्म से मेरी इच्छा है कि तमिलनाडु का एक कोई एमएलए और महाराष्ट्र का एमएलए, उनकी भी दोस्ती कैसे बन जाए। राजनीति के इस महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े गैर राजनीतिक मंच एनएलसी भारत के गठन की साक्षी बनी।
us, we are Janapratinidhi. We are public representative. That is important. इस सम्मेलन के जरिए राजनीति से हटकर बात हो रही है। देश के 4,500 विधायक कैसे बने जनता की आवाज, राज्यों के बीच संवाद को कैसे बेहतर बनाया जाए, जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए, दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र भारत के सामने यह कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब जन कल्याण के लिए बेहद जरूरी था। आजादी के 75 साल बाद भी राज्यों के बीच आपसी संवाद का ऐसा कोई मंच नहीं था जहां सभी राज्यों के विधायक दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सुशासन पर बात कर सकें। Thank the young man, Shri Rahul Kara, behind all this. मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की कामयाबी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में एनएलसी भारत साझेदारी और संवाद से राष्ट्र निर्माण का एक नया इतिहास लिखेगा। एनएलसी भारत की गौरवशाली शुरुआत के बाद आज हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि अगर संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है तो संवाद उसकी धड़कन और एनएलसी भारत उस धड़कन की सबसे बुलंद आवाज है। Thank you very much, and let's give a big round of applause to the concept and execution of National Legislators Conference envisioned by our own Executive President. My friends, it is now my privilege to welcome the guest of honor of this session to share his thoughts with us, Professor Fernando Gariby. But before I do that, I request my technical team if they can show us a small film made on life and work of our guest of honor for the day, Professor Fernando Gariby. Professor Fernando Gariby stands as a distinguished polymath, a Grammy and BMI award-winning record producer, songwriter, entrepreneur, author, and keynote speaker. Having served as executive producer of Lady Gaga's Born This Way album and musical director of the corresponding global tour, Gariby has profoundly impacted contemporary popular music through his collaborations with world-renowned artists such as U2, Sia, Whitney Houston, Britney Spears, Shakira, among many others. An accomplished academic and thought leader, Gariby holds visiting lectureships at Harvard University, Harvard Business School, Harvard Medical School, the Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, and the California Western School of Law. Professor Gariby delivers lectures to the world's foremost assemblies in intelligence analysis, military science, defense strategy, and cognitive cybernetically integrated systems. As founder, chairman, and CEO of the Gariby Institute, he advances research and practice on soft power and public diplomacy across multiple academic disciplines. In parallel, advising heads of government, royal families, and global leaders in both the public and private sectors. We warmly welcome Professor Fernando Gariby. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause, Professor Fernando Gariby. Hello. Thank you. It is a very big privilege for me to be here. I'm a guest of Dr. Raul, the founder, Professor Dr. Karad, and Ram Gunno, the president of our Gariby Institute. We are here at a very critical point in humanity's history. This point in which you are embarking on is the precipice of our preservation and our survival of our species in a world in which is chaotic, disconnected, but also equally hopeful. The responsibility that you have as a social leader in impact development globally sits at the center point of a country that represents peace.
The role that you have to play here is not only in developing your skills as a business leader, as a social impact leader, as an engineer, as a coder, as an artist. All these will work together for your mission to grow and become an influencer of the world. It is my belief, and through our research, we discovered that the power and impact of your potential as future leaders is of paramount importance in a world that will be divided by two forms of intelligence. The first form of intelligence that is the most important is our intelligence, the organic intelligence. Our history of beings on this planet has given us a deep and rich dimension to understand reality. It is in this dimension that we can take our brilliance as human species and empower ourselves with a deeper enrichment of wisdom, consciousness, and academic rigor and discipline to work alongside another intelligence, which is synthetic intelligence, artificial intelligence. So in our world, we have these two intelligence orders. They can both be symbiotic relation or separate. Will be up to you to decide how you will use these forms of intelligences to propagate and preserve and propel our human species forward. So when we talk about social impact and social leadership, this is the primary point from which all your work will be centered around. How can we connect with each other as countries, as future leaders? How can we find out how to form deeper relationships? Because at the stake of social leadership is relationship building. Now, I want to give you some skills to become better leaders. And the most powerful lesson I've ever learned about leadership, from speaking with global leaders, from working with the biggest artists in the world to the top academicians in the world, the biggest takeaways were learn how to serve, become extraordinary at serving, and serving each other, specifically people who have served you. How do you build relationships? You build by providing value. You do not start with an ask. More, you start with an offering. When you work with people, you must find out what their needs are and find an optimum way to serve those needs. And the return is growth for you and the other individual. This is the premise and the foundation of soft power and public diplomacy. This is the work of a social leader. You will find it very challenging in a world where these skills are not developed. So very simply put, your role is very critical in the future of our species, in the future of education, and the future of your country and all our countries. With the MIT World Peace University, it's set in prime position to teach these teachings of Vedic knowledge, consciousness, artificial intelligence, and other disciplines that revolve around wisdom and the acquirement of wisdom. It is your responsibility now moving forward to take this wisdom and apply it to real-world solutions. Real-world solutions that give this community a chance to lead in the global spectrum moving forward at a very significant point in history. So the challenge I leave you with is you can stay and listen to us speaking, or you can stay and listen to us speaking and then take this knowledge and begin to lead today. That is the message I impart as a guest of your wonderful university and the Garibay Institute for Soft Power and Public Diplomacy. Thank you very much, and I wish you the best of luck.
Thank you very much, Professor Garibay, for your words. And my friends, I would like to share one thing. I'm sure he would not say about it in his own speech, but the kind of production facility, the kind of technology integration Professor Garibay has done in his own studio in Hollywood. Of course, all the names that we have been taking, Britney Spears and Lady Gaga, Shakira, they have been part, rather he has been associated with all those creators. And my friends, the studio that he has is known for the integration of artificial intelligence, and he has graciously invited the Honorable Vice Chancellor, and he has said that he has invited that some of the students, of course, handpicked and specially identified students, those who have some grasp in this area, or rather he has invited the students and professors to his own institute, his own studio in Hollywood to experience the music and experience the creation that he has been doing. Let's give him a big round of applause once again for his kind gesture. Thank you very much, Professor Garibay. My friends, it is now my indeed honor and privilege to invite the next guest of this session, the chief guest of this session, Lieutenant General Ajay Kumar Singh Ji, to address the gathering. But before I do that, I request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Lieutenant General Ajay Kumar Singh. Lieutenant General Ajay Kumar Singh, PVSM, AVSM, YSM, SM, VSM, is a retired General Officer of the Indian Army. He was the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command of the Indian Army. He assumed the post upon superannuation of Lieutenant General Jai Singh Nain. He previously served as General Officer Commanding 33rd Corps, a General Officer with 40 years of decorated and distinguished career, an alumnus of St. Gabriel's Academy, Roorkee, National Defence Academy and Indian Military Academy. He was commissioned into 711 Gurkha Rifles in December 1984, commanded 111 Gurkha Rifles, bravest of the brave, and rose to become the Colonel of 11 Gurkha Rifles and Sikkim Scouts, besides being the President Gurkha Brigade. A seasoned military leader with wide-ranging operational experience of counter-insurgency, counter-terrorism, high-altitude, desert, jungle, and glacier operations. The officer has the unique distinction of serving in all commands and tenanting challenging command and staff appointments. Decorated in each rank, he is known for inspirational leadership, strategic acumen, operational brilliance, and adeptness in swiftly resolving intricate challenges. We warmly welcome Lieutenant General Ajay Kumar Singh. Hands, please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, the chief guest of this session, Lieutenant General Ajay Kumar Singh. 30 minutes. Okay. Jai Hind, Jai Bharat. Professor Dr. Vishwanath Karad, the founder and chief patron of MISE MIT Pune and President MIT World Peace University, and also the creator of World Peace Dome, who's not here, but also not too far from here. Physically may not be here, but I'm definite that in spirits he is very much present here. Mr. Fernando Garibay, whom you just listened, who is an exceptional creative talent. It's an honor to share the stage with him, and I wholeheartedly welcome him to India, a country with great promise and a country with great future which lies ahead of it. Professor Dr. R.M. Chitnis, the Vice Chancellor, Professor Dr. Ganesh Kakandikar, Dean Innovation, Startup and Collaboration, Dr. Prasad Khandekar, Chief Academic Officer, the faculty,
staff, students, ladies and gentlemen, and also especially for the students who are joining us and seeing this program through video conferencing in various other halls and in the classrooms. For me, it's a privilege and an honor to be in the campus of MIT World Peace University, and also in this Sabha Mandap, which is named after Swami Vivekananda. He is the one who gave the clarion call back in 1893 in the World Parliament of Religions in Chicago, when he started his address as brothers and sisters, and re-established and reaffirmed that India is the spiritual fountainhead of the world. Incidentally, his birthday is also celebrated as the National Youth Day. He always believed in the power of the youth. And I'm so glad to be present here amongst the power of the youth. He was also an ardent practitioner and a philosopher of the Advait and the Vedantic philosophy. I was also very happy. Before coming here, I offered my deepest gratitude to Sant Ganesh. I think in just about 21 years of his life, he wrote two very important seminal books. One, Ganeshwari, which is a commentary on Srimad Bhagavad Gita, and the second is Amritanubhav, experience of the nectar. The time is not very important. If you have the will, if you have the courage, if you have the understanding, and if you are rooted in spirituality, then anything and everything is feasible and possible. I'm also very happy and honored to be here in the inaugural phase of the 4th Social Leadership Development Program. And I really compliment Dr. Karad and his team for conceptualizing such a wonderful program, which sort of brings in what you read, what you study, how to apply that for the most important cause, and that is the social cause. When I came here in the hall, the first thing that we did was to sound the gong. I wonder how many of you understand the significance of sounding the gong. They say when the world was created, when the cosmos was created, there was everything, but there was no sound. And if there is no sound, there is no vibration. And if there is no vibration, there is no life. So who gave the sound? This is the month of Shravan. This is the month of Lord Shiva. Lord Vishnu has taken a little bit of a leave and left it to Lord Shiva to conduct the administration of this Brahmand. So he played the Damru. And out of the Damru came the Maheshwar Sutras. And the Maheshwar Sutras are actually the divine vibration and the start and the commencement of life in this complete cosmos. I wonder how many of you know the Maheshwar Sutra. For your benefit, I will recite the Maheshwar Sutra. Ayon, I ouch, Hayavarat, Lanna Mangranam, Jabay Gad Gash, Jab Gad Dash, Kafa Chatata Chatatava Kapaya Shashashar Hal. This is Maheshwar Sutra, the origin of life and sound in this entire cosmos.
And the second thing that we did here, after we came in this hall, is the lighting of the lamp. Lighting of the lamp signifies dispelling of the darkness. In fact, there is no darkness at all. Darkness is absence of the light. Darkness doesn't exist. It's just merely the absence of light. If there is an utter darkness, you just light a lamp and the darkness is dispelled. And when you light a lamp, you say, Shubham karoti kalyanam, arogyam dhan sampada, shatru buddhi vinashaya, deep jyotir namostute. Very small things, but they show the profoundness of our culture. And all of you possibly may be wondering that I'm speaking on a very different subject. I have taken three concepts: spirituality, leadership, and then coming on to the nation building. How are these three connected? As a citizen of this country, it is our bounden duty to contribute towards nation building. And that's why to speak on nation building becomes extremely important. That's why to have such program like SLDP becomes extremely important. And from nation building, how can you do the nation building if you have the right kind of leadership? It's only the right kind of leadership that can contribute towards nation building. And from where will come the right kind of leadership? Only if the leadership is rooted in spirituality. And today I'll connect all three. Why am I talking of the nation building at this point of time? I think India stands at the cusp of greatness. We were a great country. We are a great country, and we will continue to be a great nation. The spirituality found roots, emanated from here, and then spread far and wide in the world. When you look around today, the entire international arena, the geopolitics, is in a state of flux. There is a disruption, political, diplomatic, technological. And in this disruption, if there is a country and there is an oasis of peace and development, that's India. India shows tremendous promise, tremendous potential for growth. And it is primarily because of that our leadership has declared that by 2047, we would be a developed country. 2047, ladies and gentlemen, is merely 2 decades away. 22 years, we have 22 years. And that's why for me it is important to talk to you, the youth, because the mantle would be on you. It'll be on your shoulders, who would shepherd the country into the greatness and into 2047. And in that milieu and run up to 2047, we have also set a milestone that by 2035, we would be a 5 trillion economy. For your information, very recently we have overtaken Japan to be the 4th largest economy in the world, standing at 4.19 trillion. I'm absolutely certain that we will achieve this landmark. And why do I say, and why am I so assured? I will read out certain statistics to you. What was our state on 15th of August 1947, and what is our state today? This is the journey that we have traveled. My generation has taken the country to this level, and now onwards it is on you to take the country forward
and usher in 2047. So on 15th of August 1947, our population was 340 million. Today we are 6 times strong. We stand at 1.45 billion. The life expectancy was only 30 years, literacy was only 16%. There were only 17 universities and only 2,38,000 students. Today, Pune alone has 2,64,000 students. That's the progress that we have made. 90% of our population in 1947 was below poverty line. Our economic growth was barely 1%. It remained 1% from 1900 to 1947, whereas the population grew at 3.5%. We barely had any industry and hardly any electric power production. Only 3% of our villages were connected to the grid. There were huge food shortages, chronic disease, and malnutrition. These were all very rampant. Now I fast forward in 2025. What are the indications today? Electrification, almost 100%. Piped drinking water, almost 50%. Banking accounts, 80%. We have the second largest number of netizens in the world. 2 out of 3 people joining internet are from India. We are the largest consumer of data, more than China and the United States put together. We have seen a remarkable transformation of economy. Like I said, as per the IMF, India is the fastest growing economy with a GDP of 4.19 trillion. It took 67 years for the GDP to reach 1 trillion. It took only 8 years to make it 2 trillion. And it has taken just 5 years to get on to the 3rd trillion. FDI has increased from 10 billion US dollars in 2005 to more than 700 billion US dollars in 2025. And the biggest thing that we have seen today is the digital transformation. And this digital transformation has been facilitated by the Aadhaar card, that is 1.3 billion unique biometric identity cards, which ensured the rights of every citizen. I think it has been a great game changer. Today, we have unified payment interface, which I think is India's most spectacular success. There are 300 million UPI users, 500 million merchants which are doing UPI, and it is likely to reach 1 billion transactions daily by 2026 and 27. 41% of world's real-time financial transaction, that is nearly 0.5%, are done in India. And it is valued at 164 billion in 2024. The startups have turbocharged by this digital transformation. We have the second largest number of startups, the third largest number of unicorns. 2022, 1 unicorn every 9 days. And in 2023, there was a time when we were adding 1 unicorn every day. Because of the global meltdown, it has slowed a little, and as on date, we have 119 unicorns. The ease of doing business in India has jumped from 142nd rank in 2004 to 63rd in 2020. One of the top 10 improvers for the 3rd time in a row. India today is one of the most attractive destinations for
the world and for investments. Have a look at the infrastructure development. It is the most impressive. Total length of national highways increased by almost 59% in last 9 years. We have the second largest network after the United States of America. So this is what we have been able to achieve. This generation, which is here sitting on the podium and which is now here sitting on the front desk. And the mantle from us passes on to you to take it up forward. And that's why from the nation building, I will now touch upon the leadership. But when I talk of the leadership, who's a leader? A leader is one who leads, shows the way, creates the way. He commands willing obedience. And why he commands willing obedience is he has to have an aura. He has to be driven by dynamism. He has to be driven by values, principles, and ethics. He has to be fearless. And most importantly, I think he has to rise above the prejudices and the biases that are there. Today, all around you, when you see, we have leaders possibly not that rooted in spirituality, and that's the single most cause of what's happening around us in the world. I'm absolutely convinced that if we are rooted in spirituality and if we are unbiased and unprejudiced, we will see a transformation to peace, progress, and development. That's absolutely important. What is it that you can do as far as the nation building is concerned and as far as the leadership is concerned? Very small thing. As a citizen of this country, we are well aware of our fundamental rights. But how many of us are aware of our fundamental duties? Before we talk of rights, we must understand what are our fundamental duties. For the lack of time, I will just read. I'm sure I am addressing very sharp and intelligent young generation, and you will pick up and you will understand. And from this podium, I would like to request Dr. Vishnath Karad in absentia and Professor Dr. Chitnis, who's present here, that out of the Constitution of India, we must cull out the relevant portions, create it into a small booklet, and make sure that small booklet is issued to every student so that every day he reads what are his fundamental duties, what are his roles and responsibilities. So very quickly, in next about 2 minutes, I'll tell you. First is the respect for the Constitution, national flag, and national anthem. Protecting sovereignty, unity, and integrity of the country. Defending the country. Protecting harmony and brotherhood. Valuing and preserving culture. Protecting the environment. Developing scientific temper. Safeguarding public property. Striving for excellence. And providing education. These are the fundamental duties. Apart from this, there are other roles and responsibilities. What are these? The first, voting, extremely important. Paying taxes, participating in public affairs, cooperating with law and order, respecting the rights of others, promoting social welfare, being aware of your rights, monitoring the government, extremely important, advocating for social justice and seeking the redress. As young citizens of this country, please do remember these fundamental duties, the roles and the responsibilities that you have. And that brings me to the last part of my talk, and that is spirituality. And right from the word go,
I would like to make a differentiation between spirituality and religion. Spirituality is the fountainhead. It is the base, it is the mool, and from this have emanated all the religions of the world. Religion is codified as per the requirement of the society. So in today's era, when somewhat the religion seems to be dividing, though that was not the purpose, I think it's important for us to connect to the core values, the core beliefs that are encapsulated in spirituality. I call spirituality as a science to understand who am I. And if you do not understand who you are, then how the hell are you doing anything else? First understand yourself. And only once I have understood myself, then I am capable of doing whatever I have set my eyes to do. And that's why it's important for us to connect to ourselves, to connect to our consciousness, to connect to our core beliefs and values and systems. And you can only connect through spirituality. And what is spirituality? People talk about it. There are certain core values. What are the core values? The first is mindfulness. The most important thing. Your mind is like a monkey mind. It'll never let you in this present moment. It'll take you to past or to future. If it takes you to past, you will only regret. I could have done like this. This could have happened like this. If it takes you to future, how would it happen? Anxiety. So you keep oscillating as a person from regret to anxiety. And why? Because you are never present in this moment. Life doesn't exist in past. The life also doesn't exist in future. The life only exists in this moment, gone, this moment. Stay in the moment. And if you stay in the moment, you will manifest what we say, Aham Brahmasmi. Each of us think about 16,000 to 60,000 thoughts in a 24-hour cycle. Imagine the dissipation of energy. Every thought is an electromagnetic pulse, has an energy. And you dissipate your energy into 70,000 forms. If you can reduce this traffic, and if you can reduce it to single pointed focus, there is no difference between you and the divinity. There is a beautiful mantra in the Sanskrit says, Om Punam Mudam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. This is also complete. That is also complete. When completeness merges with the completeness, what comes out is completeness. When completeness is taken out of the completeness, what remains is completeness. You and me are Purn. We believe in Vasudev Kutumbakam. World is one oyster. Universal consciousness. Even the Sikh says, Ek Onkar. There is only one universal consciousness. So reduce the traffic. You can only reduce the traffic by remaining in this moment, now. The second is positivity. Every experience that you get makes you, and more challenging the experience, a better person you will become. So when you pray, when you go to the temples, when you go to the masjids or gurdwaras, or the synagogues, or the churches, never ask that God remove my obstacles, remove my sufferings. Ask God, request God that whatever is coming your way, you accept. And that's why acceptance is again extremely important. If you are not accepting, then you are resisting. And if you are resisting, it's negativity. You are not, because something what has to happen has already happened. So it's important to accept. And having accepted, to set upon things to do and ameliorate the conditions.
So it's extremely important to make sure. So to the God you must say, I take whatever experience comes my way as your prasad. But with that you give me the courage and the fortitude to take care of the challenges. And then you fear nothing at all. Because whatever comes with that courage and fortitude, you will be able to resolve any challenges. More the challenges, a better person. The challenges and the so-called suffering, I call them the most positive experiences. They propel you into a higher orbit. They make you a better person. They make you a better human being, make you a better version of yourself. Gratitude is extremely important. In our culture, they say you get this human life after 84 lakh yoni. Are we grateful to be born as a human? Have we ever expressed gratefulness, gratitude? We are sitting in a beautiful hall, in a beautiful college, with such distinguished faculty. Have we expressed gratitude? Unless you express gratitude, you block anything else coming your way. If you want a transformation in your life, I can share a secret. Please open a small gratitude book. Before you sleep, write 10 points. I'm grateful today for this, this, and this. And I assure you that in 20 days, your life will change miraculously. So that becomes important. And the last point is non-judgment. Never judge. We are very quick to judge. Who am I to judge? If I can control anything, I have the power only to take charge of me, myself, to improve me, not to judge anybody, unless and until I know anything and everything about that person or that situation. And you never know completely about even your most intimate people in the family. There is a portion that is always hidden. So you have no right to judge. If you stop judging a situation, if you stop judging a person, your life would change miraculously. You will have the best interpersonal relationship. When you start working, the most important thing is to have good interpersonal relationship. If you have that, everything becomes perfectly smooth. And to just reinforce the profoundness of our culture, I am from the Gurkhas. So we celebrate the Sai, we call it Navratras, an ode to the mother goddess, to the divine goddess. And I see large number of women, large number of girls. In our culture, you denote the Shakti. Shakti is the feminine element, it's not the masculine element. So this is an ode to you, Shakti. And I want to exhort to each one of you today when we are developing and large number of women are coming into the working domain. It's extremely important today to not to forget the family life. The most important strength of this country is the family life. And family life can only be integrated and taken and managed by the female, by the Shakti. So there is a beautiful Navaran mantra, Om Eng Ring Kling Chamundai Vichit. I wonder how many of you know the meaning. Understand and please listen to this meaning very carefully. Anything and everything has been asked. It is like a complete prayer. And if you can embody the quality, you will always get the grace of Mother Divine. It says, Hey Brahm Rupini, Hey Mahashakti, मुझे ब्रह्म में स्थित कर, गति मति निर्मलता शांति और स्थिरता प्रदान कर, हे क्षमा मूर्ति मुझे मर्यादा में रख, शीलवान विनम्र और विजयी बना, दुख रोग भय और संकटों से मेरी रक्षा कर, हे आनंदमयी माँ मुझे मधुरता प्रेम प्रसन्नता उत्साह भावना सिद्धि संपन्नता तुष्टि और पूर्णता प्रदान कर, परम पराक्रम वाली अजय रौद्र रूपिणी चंडी के प्रसन्न हो जाओ. थैंक यू, ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू. जय हिंद, जय भारत. Huge round of applause, my friends, as I can see.
Yes, indeed, give a standing ovation if you wish to. Don't hesitate. Sir, please go ahead, accept this standing ovation. A big round of applause for the chief guest of this session, Param Vishishta Seva Medal, Ati Vishishta Seva Medal, Yuddha Seva Medal, Lieutenant General Ajay Kumar Singh Ji. Thank you, sir. Thank you very much. My friends, as Honorable Vice Chancellor Sir also mentioned, let me share one important thing about the chief guest of this session, Lieutenant General Ajay Kumar Singh Ji. He is the current sitting member of National Security Advisory Board, NSAB, an institution that takes care of our security. Of course, the armed forces are at the border, but the strategic movement and advising to the Honorable Prime Minister is done by the NSAB, and the member of that committee, NSAB, is sitting here with us. Let's give him once again a round of applause, and let's thank him for our safety and security and the peace with which we live in this country. Thank you, sir. Thank you very much for that. My friends, in order for a country to run efficiently, it is important that we, the young students of this nation, also get closer to the political, I would say, operations of this country. And it was witnessed that the young minds of this country do not really like politics, and then they prefer to stay away from it. But that is not going to change. The wise people say that if you want to change something, that you'll have to get into it and change it from inside. With the same thought, Dr. Rahul Karad created a platform of Bharatiya Chhatra Sansad. I would like to request my technical team if they can please show us a small film on Bharatiya Chhatra Sansad. I would like to congratulate the initiatives of the MIT team in organizing its first Indian Parliament student. Bharatiya Chhatra Sansad, in its decade-long existence, has become an important aspect of ever-evolving educational landscape. MIT ने ये स्कूल ऑफ गवर्नमेंट बनाया और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए यह भारतीय छात्र संसद की कल्पना की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आए, सभी आइडियोलॉजीज के लोग आए, विचारों के लोग आए। भारतीय लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने में युवाओं की भागीदारी बेहद आवश्यक है। देश भर के युवाओं की राजनीति में भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे युवाओं को राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रेरित किया जाए, अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह का मंच कैसे तैयार किया जाए जिससे देश भर के युवा अपनी राजनीतिक सोच को मजबूती से आवाज दे सकें। I heard so many things about this organization, Bharatiya Chhatra Sansad. सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भारत का विचार है। वर्ष 2005 में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना के साथ से ही इसके संस्थापक डॉक्टर राहुल कराड इन सवालों पर मंथन कर रहे थे। परिणाम स्वरूप 2011 में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की गंगोत्री से भारतीय छात्र संसद यानी BCS का जन्म हुआ। मैं राहुल जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि वो हर साल और हर बार बहुत यशस्वी रूप से वो ये कार्यक्रम करते हैं। वास्तविक ये काम सरकार का है और समाज का। 2011 में भारतीय छात्र संसद का पहला सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया। BCS की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक इसके 14 वार्षिक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। इसमें देश के सभी राज्यों के 450 विश्वविद्यालयों के लगभग 10,000 युवा हिस्सा लेते हैं। भारतीय छात्र संसद के मंच पर हर साल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की बड़ी हस्तियां छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं। दुनिया मानती है यूनिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन यूनिफॉर्मिटी इज देयर। भारत नहीं मानता। भारत कहता है यूनिफॉर्मिटी इज नॉट नेसेसरी फॉर यूनिटी।
पिछले 14 सालों में भारतीय छात्र संसद से अब तक देश विदेश की 500 से ज्यादा अधिक हस्तियां जुड़ चुकी हैं। पिछले 14 साल में भारतीय छात्र संसद युवाओं की सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरा है। Youth Parliament concept initiation has happened from this very center of the country, MIT World Peace University, MIT School of Government, my dear friends. आज भारतीय छात्र संसद युवाओं के भरोसे का ब्रांड बन चुका है, जो हर साल हजारों युवाओं को नेतृत्व की प्रेरणा देकर राजनीति में उनका मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भारतीय छात्र संसद से प्रेरणा लेकर अब देश के दूसरे राज्यों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। आज पूरे देश को भारतीय छात्र संसद पर गर्व है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा युवा आज BCS का हिस्सा है। Thank you very much. I would now like to request the Chief Academic Officer of MIT World Peace University, Professor Dr. Prasad Khandekarji, to kindly propose the concluding remark and vote of thanks. Thank you, Professor Bapat. Before the program commenced, I had the privilege to have a discussion with Honorable Chief Guest, Lieutenant General Ajay Kumar Singh, and I was talking on the technology and defense. When I listened to your speech now, sir, I was really inspired because I saw a different, strong leader who spoke so well about the nation building, not from the defense side, but appealing to this young generation through social leadership. Thank you so much for this wonderful speech. Dear students, what a good fortune we have at today. We had the opportunity to listen to the two greatest persons, one coming from the music world, the creative side, and the other coming from the defense background, defense career. But both of them highlighted the importance of social leadership and expected that young generation like you should bring a perfect harmony and peace to the mankind. And programs like this, SLDP, are the great platforms for you to get sensitized towards your own duties for nation building and world peace. Professor Fernando, during his speech, spoke about striking a balance between organic intelligence and synthetic or artificial intelligence. And he appealed to all of you and all of us also, how we choose a balance between these two intelligences. Again, with the leadership is all about learn how to serve. Chief guest of today's function referred many Sanskrit documented literature shlokas. He spoke about sound, vibration, energy, life. He also gave the reference of sound in Mahesh Sutra. And through his inspirational speech, he appealed to all of you that it is up to you to take India to the next level, and the dream of going beyond 5 trillion economy, the responsibility lies on your shoulders. And he also pointed out and reminded us on the dais, people on the dais, that we have a great role to play in shaping the future of India as a nation. I express my sincere gratitude towards both the speakers. Thank you so much, Professor Fernando and Lieutenant General A.K. Singh, for having spent time with our young generation and inspired them towards making a world a beautiful place to live. I express my sincere gratitude towards our revered Professor Vishwanath Karad, sir, the president of this university, for having established acres of campuses which talks about spirituality, which talks about how to build the young minds. And these platforms are very important and they contribute towards nation building. Thank you so much, President, sir, for your all the vision that you laid down before us. My sincere gratitude and my own source of inspiration, Executive President Dr. Rahul Karad, sir, who is taking the legacy laid down by the founder president to the next level by identifying
the various platforms that may help not only the society, but the entire world, and is taking care of each and every stakeholder in the society and creating a platform where they can come together and again build a meaningful, peaceful, loving society. Thank you so much for that vision, Dr. Rahul Karad sir. My sincere appreciation for the thought leadership given to us by our Honorable Vice Chancellor, Professor Chitnis sir, his involvement in all the activities of this campus and the entire MIT group are basically kind of role models for all of us who are at the second level of leadership positions. Thank you so much for the leadership that you are providing to the entire university, Professor Chitnis sir. Thank you so much, Dr. Ganesh Kakandikar, for having worked day and night to make this program a great success. I know it takes a lot of blood and sweat to bring this program to this kind of level. Thank you so much for your efforts. My gratitude and appreciation, deep appreciation towards all the student volunteers who worked very hard under the leadership of Professor Kakandikar. Again, at your age, volunteering for such kind of activity and making a program a success is also a kind of leadership building exercise developed by MIT World Peace University. Thank you so much for all your efforts in last 3 weeks or 4 weeks that you have put in, and keep doing the good work for building this university to the next level. My sincere thanks to all the faculty and staff who are involved directly or indirectly in organization of this particular event. And my heart goes out because they are balancing between their academic research and all these services activities for the university. And what a wonderful job all of you have done. So big round of applause for all the faculty and staff for this work. And my last and the least, my gratitude goes towards all the media which has covered, print media, electronic media, and all those people who are giving wide coverage, YouTube channel and other channels, to this event and spreading and propagating a message of world peace through MIT World Peace University. Thank you so much. Have a wonderful life ahead. Thank you very much, Honorable Chief Academic Officer, sir. Thank you very much for being part of this inaugural session, everyone on the stage. Before we conclude this session, I would like to share with all the students present here, we are now going to have 1.5 hours of lunch break, and you are requested to assemble here at 1:30 p.m. sharp. Please remain seated until we have the national anthem and respect our country. So please remain seated till that time. Meanwhile, I would like to request all the dignitaries on the dais, if you can please hold the brochure of SLDP and give us a memorable photograph as a mark of the inauguration of SLDP 2025. Thank you. I request all the students to rise in their seats for national anthem. And I request my technical team to kindly relay. Nevertheless, we are proud Indians. Even if technology fails, we will support. Let us sing the national song, national anthem together on the count of 3. 1, 2, 3.
Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Thank you very much, dignitaries on the dais. Thank you very much, students, for being part of this inaugural session. I'll meet you all back at 1:30 p.m. sharp for the first session of SLDP 2025.
mentor and advisor, MIT World Peace University. We shall be starting the program soon. All the students who are in the Pendol quickly settle down. As soon as the guests arrive, would welcome them. We'll have ringing of the bell of the leadership, the social leadership, and then we would begin the session. So all the students who are volunteers, kindly make sure the students are seated in time. We will have to stop the movements now. There shouldn't be too many movements in the lobby there. All the concerned security personnel quickly help our students to be seated. Thank you.
innovation. Please put your hands together, dear students, to welcome Dr. Sanjay Upadhyay sir, Ms. Mukta Chaitanya ma'am, along with the dignitaries. I request the dignitaries to come to the ringing of the bell of leadership, democracy. So I request Dr. Anjali Sane ma'am to take our eminent speakers to the bell of social leadership. This is a significance from our side to reaffirm our faith in social leadership, democracy, and strengthening our own Bharat. This is the unique moment that we share every time, a symbol to make everybody hear this sound of social. Huge round of applause, dear students. Please extend your hands. And this is where we start session 1. Thank you so much, dignitaries. I humbly request moderator of the session, Dr. Anjali Sane ma'am, Dean of School of Economics and Commerce, to escort our guest to the dais. I also request Dr. Sanjay Upadhyay, Senior Advisor, Mentor, MIT World Peace University, Ms. Mukta Chaitanya ma'am, journalist, writer, digital media educator. I also request Dr. Prashant Marwalkar sir, Dr. Rajiv Sen Gupta ji, Dr. Vikram Gaikwad, Dr. Swati Bankar, Dr. Pradnya Deshpande, and Dr. Shalini Tolpe to join us on the stage. Thank you so much. Thank you for being with us. Hello and good afternoon. I am Dr. Sachin Gadekar, School of Health Sciences, stand here to welcome you all for session 1 on Communities for Change, Lead the Change, Empowering Communities. As we know, dear students, we need that forum for all of us to come together and think about, and therefore this particular theme precisely talks about how the changes in communities can lead to social leadership. We can inspire people, real communities, and driving them to sustainable impact. So once again, I welcome you all, and let us begin with our session number 1, that is session 1, SLDP 2025, Communities for Change, Lead the Change, Empowering Communities. As we know, when we started this edition of social leadership, we look at, this is one of the important social initiatives by MIT World Peace University. And there are many other such initiatives done by MIT World Peace University under the flagship of MIT brand. And one of that is NLC, National Legislator Conference. It is one of the biggest social initiatives that's impacted grassroots as well as national and international level, the platform for legislators in India under School of Government. It is a non-partisan platform for learning and development of democratic leaders that aims at strengthening democracy, dialogue, and sharing knowledge between legislators. Let us take a look at this social initiative started by MIT World Peace University. May I request our technical team to relay a short film on National Legislator Conference, that is NLC. भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च ग्रंथ है जो सरकार को शासन चलाने की शक्ति देता है। हमारा संविधान हर भारतीय की पहचान है जो सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। हर नागरिक को समान अवसर मिले, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी संवाद बेहद जरूरी है। संवाद से राष्ट्र निर्माण के मूल मंत्र के साथ राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन यानी नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत की स्थापना हुई। आजादी के अमृत काल में एनएलसी भारत का जन्म भारतीय लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुंबई में एनएलसी भारत के प्रथम सम्मेलन का आयोजन
2023 में 15 से 17 जून के बीच हुआ। इस सम्मेलन में अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा विधानसभा के स्पीकर महोदय और एमएलए एमएलसीज ने भाग लिया। पूरे प्लेटफॉर्म से मेरी इच्छा है कि तमिलनाडु का एक कोई एमएलए और महाराष्ट्र का एमएलए, उनकी भी दोस्ती कैसे बन जाए। राजनीति के इस महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े गैर राजनीतिक मंच एनएलसी भारत के गठन की साक्षी बनी। All of us, we are जनप्रतिनिधि, we are public representative, that is important. इस सम्मेलन के जरिए राजनीति से हटकर बात हो रही है। देश के 4,500 विधायक कैसे बने जनता की आवाज, राज्यों के बीच संवाद को कैसे बेहतर बनाया जाए, जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र भारत के सामने यह कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब जन कल्याण के लिए बेहद जरूरी था। आजादी के 75 साल बाद भी राज्यों के बीच आपसी संवाद का ऐसा कोई मंच नहीं था जहां सभी राज्यों के विधायक दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सुशासन पर बात कर सकें। Thank the young man, Shri Rahul Kara, behind all this. मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की कामयाबी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में एनएलसी भारत साझेदारी और संवाद से राष्ट्र निर्माण का एक नया इतिहास लिखेगा। एनएलसी भारत की गौरवशाली शुरुआत के बाद आज हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि अगर संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है तो संवाद उसकी धड़कन और एनएलसी भारत उस धड़कन की सबसे बुलंद आवाज है। Thank you, technical team. As we are here, let me underline the importance of the session, because this session would definitely focus on inspiring actions. It would talk about teamwork. It will also bring into focus the real world challenges and possible solutions. It will also promote social awareness, and there is a lot much in this session. To brief you all about this session, I would again request our technical team to relay a short film, a curtain raiser of the session. Technical team. At the heart of India's democratic and developmental journey lies the power of its people and communities that rise not in response to mandates, but out of shared responsibility and collective resolve. This is Lead the Change Empowering Communities. Here, everyday citizens take ownership of change, reimagining leadership from the grassroots, from community health workers and frontline educators to local entrepreneurs, SHG members, peace warriors, and participatory governance advocates. These changemakers identify local problems, co-create solutions, and sustain impact beyond short-term interventions for the societies. Their efforts are not just acts of service, they are acts of leadership, deeply rooted in lived realities and a profound understanding of what their people need. This session explores the process of empowerment as leadership, how dignity, access to knowledge, collective decision-making, and inclusion can redefine power structures from the bottom up. It urges us to reframe leadership not as a position of authority, but as a shared commitment to uplift, transform, and sustain progress led by the people and for the people. As we listen to narratives of courage, innovation, and solidarity, we're reminded that communities are not passive beneficiaries, but active architects of Bharat's development story. This session reaffirms our belief that when people come together, change becomes possible. Thank you, technical team. Moving on, it's time to invite the moderator of the session, Dr. Anjali Sane ma'am, Dean, School of Economics and Commerce, to welcome our eminent guest and introduce the theme of the session to all of us. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Gadekar. Good afternoon, all. Khana nahi khaya kya? Good afternoon, students. Thank you.
On behalf of our founder president, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, young and dynamic executive president, Dr. Rahul Karad sir, on behalf of Honorable Vice Chancellor, Dr. R.M. Chitnis sir, and on behalf of the entire team at MIT World Peace University, it is my proud privilege to propose the welcome address for the session 1 of the Social Leadership Development Program. On behalf of the entire team, I would like to propose the welcome to our eminent guest, Dr. Sanjay Upadhyay. I don't know whether it's right to call him a guest because Dr. Upadhyay indeed is a family member at MIT World Peace University, an orator par excellence, an actor, a writer, a director, magician, and dear students, the list goes on. Sir, you are an inspiration for all of us, but the title that I know is the one for which we at MIT WPU admire you the most, and that is Guru Mitra. I am sure Upadhyay sir will discuss with all of you about the concept of Guru Mitra, and I encourage all the students of MIT World Peace University to indeed take advantage of the fact that we have such an eminent personality amongst us and interact with him in person. On this occasion, I would also like to welcome Ms. Mukta Chaitanya, journalist, writer, digital media educator, and a digital well-being trainer. Mukta is a seasoned media professional with over 20 years of experience in content writing, communication, and digital education. Her career reflects a deep commitment to ethical journalism, digital well-being, and social impact. Today, on the occasion of the Social Leadership Development Program, she will be addressing all the young minds on the theme of digital well-being. Dear students, Michelangelo once said, "The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short, but in setting our aim too low and achieving our mark." There comes thus a time in our life when we all need a little bit of inspiration. Things might not be working out. You may begin doubting the process. You begin feeling that the ladder is resting on the wrong wall, or you may simply need a small nudge in the right direction. At MIT WPU, we believe that the Social Leadership Development Program is the platform to inspire young minds who have joined us for their first year of undergraduate program. SLDP aims to nurture leadership skills, social responsibility, and community engagement among our students. It promises to be an enlightening and enriching experience for all the participants with a range of objectives designed to foster teamwork, innovation, and personal growth. I welcome you all to session 1 based on the theme of Communities for Change, Lead the Change, Empowering Communities and Awakening the Phoenix Within. Dear students, excellence is a mindset. It is a belief. It is a behavior. It is an attitude. It is a journey. For a number of years, I have been fascinated with this word excellence and have pondered and strived to achieve excellence. I realize that achieving excellence is extremely difficult. It is not free, and you have to pay the price to get there. At the same time, it is not magic, coincidence, or luck. I recognize that the journey to excellence follows a process. This process is going to be supported by sheer hard work and grabbing the right opportunity at the right time. We welcome you all to the first session of the Social Leadership Development Program and look forward to hearing the eminent guests about their inspirational journey to excellence. Once again, on behalf of the entire team at SLDP, I extend a warm welcome to all the guests present on the dais, all the eminent dignitaries, deans, directors present on the dais, and most importantly, a warm welcome to all my dear students. Welcome to session 1 of the Social Leadership Development Program.
Thank you, ma'am. Thank you so much. You round of applause, ma'am. Thank you for setting the tone of the session by a powerful beginning. Dear students, it's time for the felicitation of the guests. As we say, Atithi Devo Bhava. Let us follow our tradition. May I request Dr. Anjali Sane, the moderator of the session, to kindly felicitate our guest speaker. To begin with, Dr. Sanjay Upadhyay. May I request all other dignitaries to join for felicitating Dr. Sanjay Upadhyay, mentor, senior advisor at MIT World Peace University. Huge round of applause, my dear students. Keep clapping as we welcome our own family member here. A real magician of words, a poet, writer, orator, script writer, actor, a fantastic public speaker. Yes, a life coach indeed we have at MIT World Peace University. Thank you so much. May I now request Dr. Anjali Sane to felicitate and welcome Ms. Mukta Chaitanya ma'am. It is our spirit to welcome Atithi. Keep clapping, my dear students. Let us welcome our another guest here. Thank you so much for that enthusiasm. Thank you so much, everyone. I request all the dignitaries to kindly take their seats and be seated. Thank you so much, ma'am, for doing the honors. Moving on, it's time to listen to the first eminent speaker, Ms. Mukta Chaitanya. She is a distinguished journalist, writer, digital media educator, extensive experience in storytelling, communication, and she's a certified digital well-being trainer. To throw some light on her life work, may I request our technical team to relay a short film to introduce our guest speaker to the audience. Digital education. Mukta Chaitanya is a seasoned media professional with over 20 years of experience in content writing, communication, and digital education. Her career reflects a deep commitment to ethical journalism, digital well-being, and social impact. Mukta began her career with Lokmat, where she worked for more than a decade. During her tenure, she handled diverse editorial roles and reported on pressing social and developmental issues. She currently works as a freelance content provider, script editor, and content consultant across print, digital, and audiovisual platforms, contributing meaningful narratives that engage and educate. Mukta Chaitanya is a founding member of Cyber Matron, a cyber psychosocial and legal first aid center in Pune that provides immediate support and awareness programs for digital well-being. Through her writing, research, and public initiatives, Mukta Chaitanya exemplifies the role of media in enabling social change. Her work bridges journalism, education, and advocacy, making her an influential voice in today's digitally connected world. We warmly welcome Mukta Chaitanya. I would request Ms. Mukta Chaitanya now to come forward and address the gathering. Dear students, please welcome her with a huge round of applause, Ms. Mukta Chaitanya amongst us. Good afternoon, everyone. Thank you so much for a lovely video. It was a surprise for me, so felt good. Thank you, MIT, for inviting.
because digital well-being and digital wisdom is something that we all should be aware and know about. It is an honor to be here with such a bright, enthusiastic minds at the beginning of your journey. When I looked at you, I don't see students. I see future leaders, creators, problem solvers, and change makers. And that's exactly what we are here to talk about today. This isn't about a motivational title. I think it is about action. Let's begin with a simple question. What is challenge? What does challenge mean to you? Is it a big revolution, a breakthrough invention, or a government policy? I think most often a real change is quiet. It is local. It is slow and deeply personal. It starts with you, with your awareness, your empathy, and your actions. As someone from the world of digital who works with school and college students, teachers, professionals, government, NGOs, corporates across Maharashtra on digital literacy, emotional well-being, cyber safety, gender sensitivity, I have seen firsthand small efforts with consistency can shift mindsets and transforms lives. Let's begin with a small bit of my journey. I'm a writer, a trainer, researcher, and someone who listens deeply to the people. I've seen students addicted to YouTube and games. I've seen teenagers haunted by body images issued due to filters and influencers. I've seen parents feeling helpless in a digital world they barely understand. And I have seen how even one workshop, one honest conversation, or one empowering story can spark the change. That's the power of leading change with empathy. Today, मैं थोड़ा अलग बातें करने वाली हूँ. I'm not going to talk about motivational speech or positive thoughts or आप अभी एक नए जर्नी के लिए शुरुआत कर रहे हैं. You are stepping into a professional life, a university life. So I'm not going to give you a motivational speech. पर मैं आपको कोई एक ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए आई हूँ, which is related to digital literacy and digital well-being. हमारे सबके पास मोबाइल है. हम सुबह से लेके रात को सोने तक we used different platforms like social media platforms, gaming platforms, e-shopping, n number of things are there and we are constantly using all those things. पर आपने कभी ये सोचा है कि इन चीज़ों का आप पे इम्पैक्ट क्या होता है? आपके चैलेंजेस क्या है when we are talking about hybrid lifestyle? ये हाइब्रिड लाइफस्टाइल जो वर्ड है ये कोविड के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं. बिकॉज इन द कोविड you must be remember हमारी स्कूल कॉलेजेस everything was online, even classes, birthday parties were online. और we were enjoying it because it was very convenient for us. पर ये सारी चीज़ें जब हम ऑनलाइन करते हैं तो there is a impact value to every effort. कौन सी challenges है हमारे सामने? ऐसा अगर किसी ने मुझे पूछा तो मैं कहूँगी 4 challenges, 4 challenges we have today in front of us. First is obviously your data privacy. आपकी जो personal information है that is the biggest challenge we have right now. क्योंकि आपका डेटा जो है वही तय करता है कि आप क्या खरीदोगे, क्या सोचोगे, क्या बिहेव करोगे, किस तरह से you are going to use digital platforms, digital apps, everything. It is all based on your digital data, your digital footprint and your digital profile.
शायद आपको ये चीज़ पता होगी कि एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन अल्गोरिदम्स एंड अल्गोरिदम्स बेस्ड ऑन योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। सो आपके डिजिटल फुटप्रिंट आप किस तरह से तैयार करते हो, इसके ऊपर होगा इस आगे की दुनिया में कि आप क्या सोचोगे, आपको क्या अच्छा लगेगा और आप कौन सी चीज़ें ऑनलाइन स्पेस में जाके खरीदारी करोगे। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन योर डिजिटल फुटप्रिंट। So understanding your digital profile, understanding how to control that profile, how to manipulate algorithms, and how to safeguard yourself in digital space is one of the biggest challenge that we are facing right now. What is the second challenge? I think it's of internet addiction. हम normally अगर आप सोचें कि भारतीय लोगों का स्क्रीन टाइम कितना है, तो हमारा स्क्रीन टाइम इज़ 7 to 8 आवर्स मिनिमम। यानी कोई भी इंसान भारत में कम से कम 7 से 8 घंटे ऑनलाइन स्पेस में निकालता है। और हर वक्त ये जो टाइमिंग है, जो स्क्रीन टाइम है, ये हमारे बेनिफिट के लिए या फॉर द बेटर यूटिलिटी होता है, ऐसा नहीं है। वी नो दैट। हम लोग डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हम लोग रैंडमली इस साइड से उस साइड हॉपिंग करते हैं, वी रैंडमली सर्च फॉर थिंग्स, वी रैंडमली फॉलो पीपल, वी डोंट नो मेनी टाइम्स व्हाट वी आर डूइंग ऑनलाइन। एक बार रील देखने के लिए चालू कर दिए तो रील ही चालू रहता है, ख़त्म ही नहीं होता। टाइम कब निकल जाता है, वी डोंट नो दैट। सो दिस इज़ ऑल इंटरनेट डिपेंडेंसी, दिस इज़ ऑल इंटरनेट एडिक्शन। इफ़ अगर आप तय कर रहे हो कि आई एम गोइंग टू प्ले ओनली फॉर हाफ एन आवर एंड व्हेन यू सी द क्लॉक इट इज़ ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स ऑलरेडी चले गए हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन अ पाथ ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। क्योंकि अगर हम तय करते हैं आधा घंटा और स्पेंड करते हैं 2 घंटा, दैट मीन्स योर माइंड, योर बॉडी, योर ब्रेन इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। इफ़ यू अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं इस मंथ कोई भी ऑनलाइन चीज़ शॉपिंग नहीं करूँगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी ऑनलाइन शॉपिंग, और कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसा सर्च नहीं करने वाली हूँ, एंड यू लैंड अप बाइंग सो मेनी थिंग्स, दैट मीन्स यू आर ऑन द पाथ ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। हमको इंटरनेट एडिक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज most of the people in India who are using internet right now are internet dependent. They may not be internet addicts. शायद वो internet addict नहीं है, पर internet dependent ज़रूर है। And internet dependency हमारे साथ क्या करती है? तो हमारे जो life skills है, वो life skills को damage करती है। आप सभी बच्चे शायद AI tools utilize करते होंगे, like ChatGPT. It is so convenient, you just give it a prompt and everything is done. पर अगर आप बारकाई से सोचे, ध्यान से सोचे, तो what AI tools are doing, they are saying don't think. आप सोचो मत, हम हैं ना आपके लिए, हम सोचते हैं, आप मत सोचो। आपको ये समझना ज़रूरी है कि AI tools are our assistants. वो हमारे लिए असिस्टेंट की भूमिका में रहना ज़रूरी है। दे आर नॉट समवन यू आर और यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन। अगर AI टूल्स आपको कहते हैं कि सोचो मत और मैं सब कुछ आपके लिए कर देता हूँ, दैट मीन्स यू आर इन अ डेंजर जोन। हमारे पास एक लड़का आया था, ही वॉज आई गेस 17-18 years old, एंड ही यूज टू यूज़ कैरेक्टर AI अ लॉट। बहुत इस्तेमाल करता था कैरेक्टर AI, उस पर बहुत उसने चैटबॉट्स कैरेक्टर्स बनाए थे, ही यूज टू टॉक टू देम, बहुत सारी चीज़ें वो करता रहता था। एंड वाई वो हमारे यहाँ क्यों आया था? बिकॉज इन वन ऑफ दीज चैट्स उसने कैरेक्टर AI के उसने जो कुछ भी चैटबॉट बनाया था, कैरेक्टर बनाया था, उसके साथ बातचीत करते समय उसने पूछा कि आर यू अ ह्यूमन और अ AI चैटबॉट? और वो चैटबॉट ने रिस्पॉन्ड किया, नो आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ चैटबॉट। एंड ही वॉज शॉक्ड बिकॉज वो उसको पता था कि दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो एक चैटबॉट से बात कर रहा है,
But the chatbot is not ready to accept that it's an AI tool. He's saying, I'm a human being. So that is the biggest challenge we have. AI is not going to behave like AI anymore. वो इंसान की तरह सोचने लगा है, इंसान की तरह बिहेव करने लगा है और इंसान की तरह वो इम्प्रेशंस देने की कोशिश कर रहा है कि आप जिससे बात कर रहे हैं, आप जिससे हेल्प ले रहे हैं, वो एक इंसान है, वो एक टेक्नोलॉजी नहीं है. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज. क्योंकि अमेरिका में एक केस हुआ था, वहाँ सेम सिमिलर चैटबॉट के साथ एक 14 years old child was having conversations, long conversations with this chatbot, and in one of those conversations the chatbot told him that you are a useless child and just आप खुदकुशी कर लो, you are not worth it. And he was so much involved, emotionally invested with that chatbot that the child actually committed suicide. These kind of things are happening around us. And we should be aware of what we are stepping into. हमको जितना डिजिटल वर्ल्ड अमेजिंग लगता है, कलरफुल लगता है, थॉटफुल लगता है, उतना वो ज़रूर है. पर वहाँ के जो थ्रेट्स है, वो थ्रेट्स भी हमने जान लेना, हमें उस थ्रेट्स के बारे में पूरे सी और करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास होना इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी इन टूडेज़ वर्ल्ड. अगर वो हमारे पास नहीं है, then we are stepping into a very difficult zone where we are digitally illiterate. We are not aware of what is the impact value of all these apps, all these platforms. We don't know whether we are dependent or addict. We don't know anything. And इस तरह की situation जहाँ हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, is not good, is not worth it. So आप एक ऐसे माहौल में इसके बाद की ज़िंदगी जीने वाले हो जो हाइब्रिड लाइफस्टाइल है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो स्पेसेस है, वो दोनों स्पेसेस का महत्व जो है वो इक्वल है. अगर हम लोग हाइब्रिड लाइफस्टाइल में जाने वाले हैं और हाइब्रिड लाइफस्टाइल ही जीने वाले हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी इक्विप्ड विद द टूल्स to deal with such kind of space and such kind of collaboration of two worlds. One is virtual and one is real. तो ये tools कौन सी है? तो first to understand what are the challenges that we are facing. जैसे मैंने कहा, first is data privacy, second is the internet addiction, third is digital और cyber crimes, जिसकी इंटेंसिटी कह सकते हैं आप, या जिसका उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे सोच से भी बहुत ज़्यादा है. कई बार टीनेजर्स के साथ जब मैं बातचीत करती हूँ दे से कि हमारा क्या हम कहाँ साइबर क्राइम्स में जाएंगे, वो हमें क्यों उसकी तकलीफ़ होगी. वी आर नॉट देयर, वी आर नॉट अर्निंग, हमारे पास तो ऐसे इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि कोई साइबर क्रिमिनल आके हमको अटैक करे, हमको ये करे वो करे. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. प्लीज़ अंडरस्टैंड, साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है, बच्चे के साथ भी हो सकता है, बूढ़े के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ भी हो सकता है. साइबर क्राइम को एज, जेंडर, आप कहाँ के रहने वाले हो, इससे कोई मतलब नहीं है. साइबर क्राइम ये साइबर क्राइम है. इफ़ यू हैव अ फ़ोन इन योर हैंड, इफ़ यू आर ऑन इंटरनेट और ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ एप्स, तो आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है. तो साइबर क्राइम ना हो हमारे साथ, इसलिए कुछ टूल्स हमारे पास होने ज़रूरी है, विच आर बेसिकली आई विल से वो क्रिटिकल थिंकिंग के टूल्स हैं, नॉट जस्ट गैजेट्स और नॉट जस्ट एनी softwares we install in our phones or laptop or desktop. It is more about your critical thinking.
तो हर एक टीनेजर क्या होता है ना, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आजकल सभी बच्चे ये बात करते हैं कि नो दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमारा इन डिजिटल स्पेस वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा अलग है। सो व्हाट इज़ पी? पी इज़ टेक अ पॉज। आप जब ऑनलाइन स्पेस में होते हो और आपको किसी भी चीज़ पे अगर डाउट हो या ऐसा लगे कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन, देन टेक अ पॉज, ब्रीथ, सोचो थोड़ा कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है। आर यू गोइंग टू गेट इन्वेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन और नॉट? आर यू गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन दैट ऐप और नॉट? Just take a pause and think. O is like, take it like a zero, no trust. Do not believe anything online. Never, ever. क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा पर ऑनलाइन स्पेस की जो इंडस्ट्री है, फेक इंडस्ट्री जो है, वो ऑलमोस्ट $80 बिलियन की है एंड इट इज़ ग्रोइंग मैसिवली। सो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सच है, झूठ है, यू नेवर नो। सो डोंट ट्रस्ट। एंड व्हाट इज़ वी? सो वेरीफाई। Whatever information you are getting online, please verify those contents. Whether it is a video, photo, text, messages, whatever it is. Just verify, then trust and go ahead. If you follow just POV, then आप बहुत ज़्यादा तरीके से अपने आप को ऑनलाइन स्पेस में सुरक्षित कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल वेलनेस जो है या डिजिटल वेलबींग जो है वो इन तीन चीज़ों से हमें ये जो तीन चैलेंजेस है वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है समझने के लिए। तो आगे जाके आज के बाद अगर आपको कोई भी चीज़ ऑनलाइन स्पेस में पोस्ट करनी है, फ़ोटो है, वीडियो है, रील है, जस्ट थिंक बिफोर यू पोस्ट, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। हर एक फ़ोटो, हर एक वीडियो, हर एक कमेंट, हर एक फॉलो, हर एक अनफॉलो, एवरीथिंग इज़ योर डिजिटल फुटप्रिंट एंड दैट डिजिटल फुटप्रिंट इज़ गोइंग टू get used by companies, by advertisers, by governments, by cyber criminals. Everyone is behind those digital footprints. So think before your post और POV आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, so you will be more safe and more wise in the digital space. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Huge round of applause for Ms. Mukta Chaitanya, ma'am. Ma'am, thank you so much for that relevant and relatable topic that you have spoken about by giving practical example, and I hope this was an eye-opening session for our generations where they must have gained insight. Prevention is better than cure. Thank you so much, ma'am. Once again, it's time to invite our next eminent speaker, Dr. Sanjay Upadhyay, our own life coach, mentor, and senior advisor. Sir is a poet, scriptwriter, orator, actor, director, magician, and whatnot. But to throw some light on Sir's career, may I request our technical team to relay a short film on the life and work of Dr. Sanjay Upadhyay. Dr. Sanjay Govind Upadhyay is a prolific poet and versatile writer with notable publications including Vastav and Indimauchi Gani. His script writing credits extend to the Marathi TV serial 100 and the Marathi film Samradni. As a respected pravchankar, he has delivered daily lectures on the Gita and his acclaimed Gappashtakkar performances span 15 countries. Dr. Upadhyay has earned prestigious awards such as the Chetraban from Gadima Pratishthan and the Poo Bha Bhave Best Orator of the Year. With a rich portfolio, he has excelled in various roles, from creating corporate films for renowned brands to serving as an executive cultural advisor and director for educational institutions. We warmly welcome Dr. Sanjay Govind Upadhyay. Please welcome Dr. Sanjay Upadhyay, sir, with a huge round of applause.
our own Guru Mitra, Dr. Sanjay Upadhyay sir. Over to you, sir. नमस्ते। नमस्कार। खाना हो गया तो थोड़ा और जोर आना चाहिए। नमस्ते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोग इतने दूर बैठे हो कि मुझे पता नहीं लगता आपके हाथ में कुछ नहीं है या मोबाइल है करके, लेकिन मेरी बात सुनो। मनुष्य का जो आचरण है उस पे कान जो है वो सबसे ज़्यादा असर करते हैं। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसमें से आँख है। तो कतरीना कैफ का आइटम सॉन्ग चल रहा है तो हम आँख बंद कर सकते हैं। कोई करता नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं। बदबू आ गई तो हम सांस रोक सकते हैं। डायबिटीज है तो हम रसना रोक सकते हैं। कोई चीज़ गर्म है तो हम स्पर्श रोक सकते हैं, लेकिन आप कान नहीं बंद कर सकते। जब भाषण चल रहा है यहाँ वक्ताओं का, तब आप आपस में जो बात कर रहे हैं उसका कंसोलिडेटेड साउंड स्टेज पे आता है। हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम सोचते हैं कि बच्चे लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसलिए कान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर लीडर बनना है तो अच्छे सुनने की आदत डाल दो। आपके भले की पते की बात जो कर रहा है उसकी बात सुनने की कोशिश करो, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। आपकी आंखें जो है वो पावरफुल होती जा रही है दिन ब दिन। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। हाउ विल यू प्रोनाउंस SPOT? SPOT का उच्चारण कैसे करोगे? जोर से बोलो एक साथ, और जोर से SPOT। और ग्रीन सिग्नल आएगा तो क्या करोगे? क्यों स्टॉप बोल रहे हो? ग्रीन सिग्नल आएगा तो आगे जाओगे ना आप। आपने मेरी हाथ की तरफ देखा और जवाब दे दिया। योर आईज आर बिकमिंग पावरफुल एंड योर ईयर्स आर बिकमिंग डॉर्मेंट। आपके कान बंद होते जा रहे हैं। देखिए, जिंदगी में सबसे बर्बादी है जब कान बंद हो जाएंगे, तभी जिंदगी की बर्बादी है। अच्छे सुनने की आदत लगाओ, उसे कहते हैं स्लूसा। पहले खुद के विचार बंद करो, स्टॉप, देन लिसन, देन अंडरस्टैंड, देन सूद, उस पर चिंतन करो, मनन करो, और देन एक्ट। इस उम्र में अगर आप सुनने की आदत नहीं डालोगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसलिए अगर लीडर बनना है तो पहली क्वालिटी आपके पास ये चाहिए। मैं सोशल लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लीडर की बात कर रहा हूँ। वो बाद में आप तय कीजिएगा आपको सोशल बनना है या पॉलिटिकल बनना है या कल्चरल बनना है, वो बात की बात आ गई। लेकिन पहले आप लीडर हो क्या? लीडर बनने का क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है लीडर बनने का? कैसे लीडर आगे आगे चला जाएगा? तो पहले खुद के लीडर बनो। स्वयं नेता, मैं ही मेरा नेता बन जाऊं, पहले वो करो, फिर बाद में दूसरा स्टेप आएगा। आप यहाँ MIT में हर सुबह जो 4 मिनट की प्रार्थना सुनते हो, उसमें ओम नमो जय आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा देवा तूच गणेशु सकलमति प्रकाशु मणे निवृत्ति दासु अवधार रिजोजी, ये जो प्रार्थना है उसमें ये जो जय जय स्व संवेद्या है, उसका मतलब समझ लो। सिर्फ प्रार्थना चल रही है, हम जा रहे हैं, वो सिक्योरिटी वाले ने सीटी बजाई इसलिए हम रुक गए, मोबाइल पे बातें करते रहे, ऐसे मत करो। प्रार्थना सुनो। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए रखिए। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जो फाउंडर प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये प्रार्थना रखने का कारण ही वही है कि जय जय स्व संवेद्या। विद ये संस्कृत वर्ब है, उसका मतलब है टू नो, इंग्लिश में टू नो।
वेद, द थिंग विच इज नोन दैट बिकम्स नाउन। वेद्या, जिसे मालूम है वो क्या मालूम है उसे? संवेद्या, कंसिस्टेंसी है। सं अक्षर जो है भाषा में वो कंसिस्टेंसी दिखाता है। संस्था, संशोधन, संवेद्या। और क्या संवेद्या? स्वसंवेद्या। मैं खुद को जान लेता हूँ पहले। मैं जब खुद को जान लेता हूँ तब लीडर बनने की तरफ मैं जाता हूँ, अग्रसर होता हूँ, नहीं तो नहीं होता हूँ। आप लोग मेरी बात सुन रहे हो मुझे मालूम है, लेकिन इतना ध्यान में रखो कि खुद को जानते हो क्या? वो नहीं जानते, इसलिए आज प्रॉब्लम है। एंग्जाइटी है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, डिप्रेशन है बच्चों में, क्योंकि कान बंद करके रखे हैं, सिर्फ आंखों की बात चलती है। मुझे मालूम है आंखों की बात क्या चलती है। वो कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है? कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है? ये हकीकत दो निगाहों से बयां होती है। लेकिन कई बार निगाहें फंसाती है आपको, और ये इसलिए सुनना है। जो लीडर अच्छा सुनता है वो लीडर बनता है। और ये जो इतना सारा डॉक्टर राहुल कराड़ जी ने ये प्रयास किया है SLDP का, सोशल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका मकसद ही वही है कि आपका जो एकेडमिक एजुकेशन है उसके अलावा आप लीडर बनते हो क्या? इसलिए खुद के लीडर बनो पहले। जय जय स्व संवेद्या, तभी बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरा स्टेप है आपका परिवार। आप जिस घर में रहते हो, अपने माता पिता और बहन भाइयों के साथ रहते हो, वहां पे आप लीडर हो क्या? घर में लीडर हो क्या? लीडर होना का मतलब है आपके घर में अपनी माँ और पिताजी को आपका आधार लगना चाहिए। आप अपने माता पिता के आधार कार्ड बन सकते हो क्या? इस उम्र में हम आए हो, आपका 19 टीन खत्म हो गया है। अगर टीन खत्म होते जा रहा है तो पहले घर में आप लीडर हो क्या? अपने माँ बाप के, उनके सुख दुख में आपका आधार है क्या? वो पहले देखो। ये बाकी बातें छोड़ देना। दूसरा, परिवार में आप नेतृत्व करते हो क्या? बिकॉज वही एक जगह है जहां आप रिहर्सल कर सकते हो। लीडरशिप की रिहर्सल घर में कर सकते हो आप वो करते नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है। ये जो बातें करनी है वो समझने की कोशिश करो, ठान ले लो मैं जो बोल रहा हूं। फिर तीसरी बात आएगी अपनी कम्युनिटी, सोसाइटी, व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र और फिर विश्व। लीडरशिप ऐसे जाएगी। अगर लीडर बनना है तो इस तरह से प्रयास करना होगा आपको। आप खुद के लीडर नहीं हो, दूसरों को क्या दोगे? दूसरे का क्या नेतृत्व करोगे अगर आप खुद ही लीडर नहीं हो तो? परिवार में, आपके घर में आने के बाद ऐसे लगना चाहिए माँ और पिताजी को, चलो बेटा आ गया, अब बातें सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हो रहा है क्या? आप ही देख लो, खुद ही आपका समीक्षा खुद ही कर लो, परीक्षण, कि क्या मैं से जी रहा हूँ क्या मैं? या मैं खुद को सिगरेट पीते हुए ज़्यादा स्मार्ट समझता हूँ, या मैं खुद को नशा करते हुए खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझता हूँ, या मैं खुद को प्यार करते हुए ज़्यादा स्मार्ट समझता हूँ। मेरा बेस्टी है, मेरा गर्लफ्रेंड है, ये जो सब चीज़ें चल रही है। आप स्टाइल में बोल रहे हो बाल ऐसे करके, ए बीटी मत देना, लेकिन बीटी का मतलब मालूम है क्या? वो मालूम है तो सोशल लीडरशिप है, नहीं तो नहीं है। बीटी का मतलब आपको मालूम है, बैड ट्रिप करके, लेकिन ये बैड ट्रिप शब्द आया कहाँ से ये मालूम है क्या? वहाँ पे सोशल लीडरशिप है। वो आया ड्रग एडिक्ट्स लोगों के, जो ड्रग्स लेते हैं और नशा नहीं हुआ तो वो कहते हैं कि अब बैड ट्रिप लग गया, आज मैंने नशा करने के बाद भी नशा नहीं हुई। तो ये मालूम होने के बाद भी अगर आप वो ऐसे कर रहे हो तो आप गलत फहमी में हो। अगर लीडर बनना है तो पहले भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते यह बात ध्यान में रखो जिंदगी भर, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। जिंदगी भर अपने रूम में लिख के रखो, पाश्चिमात्य का अनुकरण करना मतलब आधुनिकता नहीं है। और दूसरी बात, मेकनाइजेशन इज नॉट सिविलाइजेशन। मेरे हाथ में फोन है, भले एप्पल 16 होगा, लेकिन फोन पे मैं क्या बात करता हूँ उस भाषा पे निर्भर करेगा कि मैं लीडर हूँ या नहीं हूँ। 16 है करके मैं सिविलाइज नहीं होता, ध्यान में रखो। हमारे देश में ये उल्टा बनाया जा रहा है।
अभी भी 4-5 छोटे मेरे दोस्तों को ताली बजाने की इच्छा हो रही है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि बाकी लोग नहीं बजाते। मैं अकेला बैठूं और बाद में कोई कहेगा चलो तू पागल है क्या। मुझे अच्छा लगा, मैंने तालियां बजाई, ऐसे व्यक्त हो जाओ। मुझे तालियां चाहिए इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि व्यक्त हो जाओ पूरी तरह। मुझे लगा अच्छा, ये अच्छा बात हो रहा है, अच्छी हमारे लिए हो रही है, तो मैं ताली बजाऊंगा। ये बाकी बजाए ना बजाए उनका नसीब, लेकिन ये पूरे जिंदगी में ये डिटर्मिनेशन जो है, कन्विक्शन जो है, वो लाओगे तभी लीडर बनोगे। मैं अभी तक सोशल की बात नहीं कर रहा हूं, ये सोशल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लेकिन मैं सिर्फ लीडरशिप की बात कर रहा हूं, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आप खुद को पहचानो, क्या मैं लीडर हूं क्या, उस पर निर्भर करेगा। ठान लो, अपने रूम में लिख के रखो, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। जो ऐसे लिख के बर्ताव करता है वो जीतता है। बट पहले सोचो तो सही कि यस आई कैन। अभी मैं भी कॉलेज में था आपकी तरह, और मुझे ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने की इच्छा थी, लेकिन मुझे कोई लेता नहीं था ऑर्केस्ट्रा के गाना गाने के लिए, क्योंकि मेरी आवाज़ सुनकर दोस्त कहते थे क्या गला पाया है, दबाने को जी चाहता है तो मुझे कोई लेता नहीं था। लेकिन मैंने तो ठान लिया था कि कैसे भी करके ऑर्केस्ट्रा के मंच पे जाना ही है कॉलेज में। तो मैं उस रूम के बाहर जहाँ रिहर्सल चलती थी वहाँ बाहर खड़ा रहता था और वड़ा पाव रखे दो, पानी दो, ये सब सेवा करता रहा उन लोगों की जो स्टेज पे जाने वाले थे। ऊपर वाले ने देखा, इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन। ऊपर वाले ने सोचा ये बंदा तो ठान लिया है, कुछ उसको मदद करेंगे। फिर अंदर एक रिहर्सल में एक लड़के ने कहा कि मैं किशोर कुमार का एक गाना गाऊंगा, और किशोर कुमार का गाना वो गाने वाला था, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। ऐसे गाना अंदर शुरू हो गया। लेकिन उस गायक को किशोर कुमार ने बीच में एक आवाज़ निकाली है, विच इज़ नॉट अ इंस्ट्रूमेंटल साउंड, उसके गले से निकाला आवाज़ है, तो वो नहीं आ रहा था। तो उसको डायरेक्टर बोला तुम जाओ, अगर वो आवाज़ नहीं आ रही तो तुम गा नहीं सकते। तो मायूस होकर बेचारा बाहर आया क्लासरूम से। मैं बाहर खड़ा था, मैंने पूछा क्या हुआ, बोलते वो किशोर कुमार का बीच जो आवाज़ निकाला है वो मैं नहीं निकाल सकता, इसलिए मुझे बाहर निकाला। मैं बोला चल अंदर। तो मैं गया और डायरेक्टर से पूछा क्या ज़रूरी है कि इसी ने वो आवाज़ निकालनी है। तो डायरेक्टर बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोला मैं निकालूँ चलेगा, बोला बिल्कुल चलेगा। तो बच्चे का भी काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। और फिर बच्चे ने गाना गाया, तुम ही कहो ये कोई बात है। ये क्यों मुमकिन हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ बिकॉज आई थॉट आई कैन एंड आई वॉज देयर ऑन द स्टेज। सोशल लीडरशिप, कल्चरल लीडरशिप था पूरे ऑर्केस्ट्रा में। मैं जितना ध्यान में रहा मेरे दोस्तों के, अब वो गायक नहीं रहा। कहने का मतलब ये जिंदगी इस तरह से जीनी है, प्रसन्न रहो, खुश रहो, हंसते रहो। स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। अपने जो रिलेशनशिप है उसमें भी लीडरशिप है ना। पहला रिलेशनशिप क्या है? इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन का मतलब है मेरे दिल से 6 इंच के अंदर जो लोग हैं उसमें माँ है, पिताजी है, बहन है और भाई है, ये 4 जन वहाँ पे है। शादी के बाद शायद बीबी और पति रहेगा, शायद, मालूम नहीं, लेकिन इंटीमेट जोन में तो वो रहते हैं 4 जन। फिर 6 इंच से लेकर 3 फीट तक आप जाओगे तो वहाँ पे है पर्सनल जोन। ये पर्सनल जोन का मतलब क्या है? वहाँ पे रिश्तेदार है, हमारे आजू बाजू वाले लोग हैं, ये सब उसके बाद जो है उसे कहते हैं सोशल जोन, जिस लीडरशिप की बात हो रही है। तो पहले इंटीमेट जोन में मैं लीडर हूँ क्या, फिर पर्सनल जोन में मैं लीडर हूँ क्या, फिर मैं सोशल जोन में जाऊँगा। और सोशल जोन के आगे जाके रहता है पब्लिक जोन, वो 12 फीट के आगे। क्वेश्चन इज, अपने ज़िंदगी की तरफ देख रहे हो, MIT में संत ज्ञानेश्वर की जो मूर्ति है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही वहाँ पे रखी है। इट्स अ पर्सनालिटी एमिलियोरेशन। साइंस और विज्ञान इकट्ठा जा रहा है, शास्त्र और विज्ञान इकट्ठा जा रहा है। ये वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, पीस क्यों है? पीस कैसे आएगा? स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था
कि साइंस एंड रिलीजन टुगेदर विल ब्रिंग पीस एंड हार्मनी टू द मैनकाइंड। आज आपको नहीं लगता कि वैसे होना चाहिए? वो नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सब कुछ उल्टा सुल्टा हो गया है। अपने क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड था वो वाइट हो गया है, और अपने क्लासरूम में जो चौक था, जो सफ़ेद था, वो ब्लैक हो गया है। सब कुछ उल्टा सुल्टा। पिताजी को डैड बोल रहे हैं, कुछ चेंज हुआ तो फैट बोल रहे हैं। शोरमा कल्चर में शोरमा अच्छा खाया तो बोलते हैं यम्मी, ऐसे बोलते हैं। और माँ, ये बढ़िया शब्द है, वहाँ पे कहते हैं मम्मी। कौवे को बोल रहे क्रो, भाई को बोल रहे ब्रो, शांति को बोल रहे पीस, बहन को बोल रहे सिस, रुमाल को बोल रहे हैंकी, चपाती को बोल रहे फ्रैंकी। आपको क्या लगा आप सुधर रहे हो क्या? हाँ, आप मॉडर्न हो रहे हो, ट्रेंडी हो रहे हो क्या, जेंजी करके? एक्चुअली आप उल्टा जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हम आगे जा रहे हैं, ये उल्टे आ रहे हो। क्योंकि ये जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति की इच्छा अब सारी दुनिया देखती है और चाहती है कि भारतीय संस्कृति की जो बात है वसुधैव कुटुंबकम, वो आनी चाहिए, और हम उल्टी यात्रा कर रहे हैं। बच जाओ उसमें। लीडर बनना है आपको, नहीं बनना है तो नहीं बनना है, कम से कम इच्छा तो मन में रखो कि मुझे लीडर बनना है। स्वयं का लीडर बनो। जरूरत नहीं कि आप समाज में जाके लीडर बनो, घर का, परिवार का लीडर बनो, तभी बात बनेगी। सोशल लीडरशिप की जो बात बनती है वो तीसरे नंबर पे आती है, और वही इसी के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम है। लेकिन पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मैं खुद लीडर हूँ या नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए, फिर तय करेंगे कि उस पर क्या चलाएंगे, वॉशिंग मशीन चलाएंगे कि माइक्रोवेव चलाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज अच्छा होना चाहिए। जो सोना है वो सोना, बेसिकली सोना अच्छा होना चाहिए, फिर तय करेंगे हमें रिंग बनानी है या ब्रेसलेट बनानी है या नेकलेस बनाने, वो बाद में तय करेंगे। वैसे पहले तुम मनुष्य करके लीडर हो क्या, दैट इज द क्वेश्चन। फिर सोशल लीडरशिप की तरह हम यात्रा करेंगे, तब तक नहीं जा सकते। तो ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। ये जब मैं कहता हूँ आप लोग होशियार हो, डार्विन के थियरी के अनुसार आप लोग ज़्यादा होशियार हो, और कई बार स्कूलों में ये मालूम होता है, अंग्रेजी सिखाने वाली टीचर अंदर आ गई और उसने बच्चे से पूछा, ये जो तालियां बजा रहे हैं ना, वो पीछे जो हुआ ना उस पर बजा रहे हैं। अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं तो तालियां बजा रहे हैं। इसका मतलब दूसरा है, कितना समय हो गया उस पर निर्भर करता है। हाँ, आई वॉज अ मैजिशियन फॉर 3 years बाय प्रोफेशन, और मैजिशियन था तो हमारे मैजिशियंस को एक ट्रेनिंग रहता है कि ऑडियंस में नज़र डालो, उसमें से उसी को ऊपर बुलाओ जो हु इज़ रेडी टू बी डिसीव्ड, फंसने के लिए जो तैयार है उसको आगे बुलाओ। जो ऐसा बैठा है, ऐसे चिन डाउन लुक अप, उसको ऊपर मत बुलाओ। और जो हाथ खुले और मुंह खुला है उसको ऊपर बुलाओ। बॉडी लैंग्वेज का पढ़ाई मैंने किया है, उसे फिजियोग्नोमी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर हूँ, चेहरा देख के ज्योतिष बोलता हूँ। लेकिन ध्यान में रखो, आपकी जो तालियां बजती है उसको ऑडियोलॉजिक है। ये भी लीडरशिप का ही पॉइंट है। ये ऑडियोलॉजिक क्या है? इस तरह से जब आप तालियां गलत जगह पे बजा रहे हो तो ऐसे होता है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये चलो एक साथ हम तालियां बजाएंगे ताकि ये बंदा बंद हो जाएगा, बहुत टाइम बात करें। जब तक वो घंटी नहीं बजती वहाँ की, तब तक मैं बोलने वाला हूँ। आपको दूसरा पर्याय भी नहीं है। मैं तो बोलूँगा, आपको हंसाने की कोशिश करूँगा। चाहे अगर शूटिंग वाले शूट करेंगे तो मैं आपको ट्रिक भी दिखाता हूँ। ये लो, शूट, क्लोजअप ले लो हाथ का, और मुझे बोलो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? सब दिखाई दे रहा है? ये दुनिया आपको कैसे फंसा रही है वो मैं दिखाता हूँ। आ गया क्लोजअप? सिर्फ मेरे हाथ का फ्रेम ले लो। हाँ, ओके। ये देखो, अभी ये जो ब्लैक स्क्रीन है, ये नया फ़ोन है, एप्पल का आईफोन 18 है, 1,75,000 कॉस्ट है इसका। और देखो इसके फीचर ऐसे है कि यहाँ जो स्क्रीन है तो ये लोकल डोमेस्टिक कॉल्स के लिए है, और यहाँ जो स्क्रीन है वो इंटरनेशनल कॉल्स के लिए है। दोनों तरफ स्क्रीन है। इट्स ए वेरी न्यू मॉडल। उसे एप्पल का 16 का मॉडल आया है कि आगे वाला, कि यहाँ भी स्क्रीन है और यहाँ भी स्क्रीन है।
और फिर ऐसे ऐसे करोगे तो पीछे का स्क्रीन गायब। आपको उल्लू बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया इस तरह आपको उल्लू बना रही है। 1,75,000 कॉस्ट, ऐसा नया फीचर है, इधर ये है उधर वो है। यू स्टार्ट बिलीविंग। डोंट डू दैट, डोंट गेट डिस्ट्यूड बाय द वर्ल्ड। पूरी दुनिया आपको फंसा रही है। ये पूरा जो दुनिया है उन्होंने तय किया है कि भारत में 65% यूथ है। इस यूथ को अगर उल्लू बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा मार्केटिंग का। जिस तरह से ब्रिटिश लोगों ने किया वही काम अब चलने की कोशिश चल रही है। आप लोगों पे निर्भर करता है कि मैं फंसूं या ना फंसूं। डोंट गेट डिसीव्ड, बी अ स्मार्ट। उतना भी लीडरशिप चलता है। सोशल लीडरशिप की बात आ गई। इतना तो करोगे, इतना करोगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनती। अंग्रेजी मैं कह रहा हूं कि जनरेशन अच्छी दिमाग, डार्विन की थियरी जो इवोल्यूशन की, वो बार बार वही बोल रहा है कि अगली जनरेशन ज़्यादा होशियार होती है। अंग्रेजी सिखाने वाली टीचर आई क्लासरूम में और उसने छोटे बच्चे से पूछा कौन से राज्य में रहते हो, तो बच्चे ने कहा महाराष्ट्र। तो टीचर ने कहा स्पेलिंग बोलो, तो लड़का बोलता है इन दैट केस गोवा। वो बच्चे ने राज्य ही बदल दिया। अगर स्पेलिंग पूछ रहे हो तो मैं राज्य ही बदल देता हूँ। होशियार है। और ऐसे चेंज ओवर जो है वो आपको पता नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक स्कूल चल रहा था। 3rd स्टैंडर्ड के क्लास में टीचर ने सवाल पूछा कि महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, और एक बच्चे ने हाथ ऊपर करके जवाब दिया इंदिरा गांधी। तो सब हंस पड़े। टीचर ने घर में चिट्ठी भेजी कि इसको व्यक्ति और नगर में भी फर्क नहीं समझ में आता करके। लेकिन चेंज देखो जिंदगी का। वो इंदिरा गांधी बोलने वाला बच्चा आज आपके सामने बात कर रहा है सोशल लीडरशिप के ऊपर। अच्छी सीटी बजाते हैं, सीटी अच्छी बजाते हैं, मुझे भी आती है। लेकिन लीडरशिप कहाँ पे आ गई? लीडरशिप वहाँ पे आ गई। नहीं, सिर्फ सीटी मारने आती है उसमें लीडरशिप नहीं है, वो कहाँ मारनी है ये भी मालूम होना चाहिए। लीडरशिप वहाँ पे आएगी कि सीटी कहाँ मारनी है। तो ये जिंदगी का रवैया ऐसा है। इसलिए लीडर बनना है तो शिष्य रहो, सीखने की कोशिश करो। डोंट किल योर इंक्विजिटिवनेस। अपनी जिज्ञासा को मत मारो, हर बात सीखने की कोशिश करो, तभी बात बनती है, नहीं तो नहीं। मैं जब यहाँ पुणे में रहने आया तो मैं जा रहा था स्कूटर पे और एक लड़का साइकिल पे चल रहा था, दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा था। तो मैंने उसे कहा अरे कितनी बढ़िया साइकिल चला रहे हो, तो हैंडल क्यों चाहिए? अगर पकड़ना ही नहीं है तो साइकिल को हैंडल की क्या ज़रूरत है? ऐसे मैंने उसे पूछा। लेकिन वो ओरिजिनल पुणे शहर का निकला, पुणे में पैदा हुआ लड़का था, तो ज़्यादा होशियार था मुझसे। उसने मुझे कहा बीच बीच में घंटी मारनी पड़ती है। मैं इतना खुश हो गया उसके जवाब पे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर घंटी बजानी है तो हैंडल चाहिए। लेकिन मैं क्या सीखा उसमें कि एक ही सवाल की तरफ 2 एंगल से देखने की शिक्षा मुझे वहाँ पे मिली कि एक ही प्रश्न है तो एक ही एंगल से नहीं देखना है। अगर जवाब चाहते हो तो दूसरे एंगल से भी उसको देखना पड़ेगा। ये दूसरा एंगल जो है दैट इज लीडरशिप, तभी बात बनेगी। मैं प्रवचन करने के निकला था, बस मिस हो गई मेरी। मैं चलना शुरू कर दिया, 30-40 मिनट तक चलते रहा, वो गांव आया नहीं। तो रास्ते के बाजू में एक किसान काम कर रहा था, तो किसान से मैंने पूछा ये गुलधा गांव कितना दूर है? वो मुझे कहता है चलो चलो आगे बढ़ो। मैं बोला ऐसे क्या जवाब दे रहा है ये? फिर पूछा उसे हाथ जोड़ के कि भाई साहब बोलो वो गुलधा गांव आने के लिए कितना टाइम लगेगा? वो उसने फिर कहा जाओ जाओ। मैं बोला ऐसे क्या जवाब दे रहा है करके मैं चल पड़ा आगे। 15 कदम आगे नहीं गया, उसने मुझे बुलाया, बोला ओ भाई साहब। मैं बोला क्या है? 15 मिनट। तो मैंने कहा फिर जब पूछ रहा था हाथ जोड़ के तब क्यों नहीं जवाब दिया? तो वो कहता है तुम्हारा स्पीड देखा। समझ में आया? चलने का स्पीड देखा, वो स्पीड देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कितना मिनट लगेगा। खड़े रह के मुझे मत सवाल करो, एक ही जगह पे खड़े रह के कितना टाइम लगेगा मुझे मत पूछो। भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग यही कहता है। थोड़ी अपनी भारतीय संस्कृति की पढ़ाई करो, फिर आपको पता लगेगा मैं जो बोल रहा हूँ।
नहीं तो जिंदगी तो चलती जरी है, चलती जाएगी आगे, लेकिन लीडरशिप जो है, कंटेंटमेंट जो है, वो कंटेंटमेंट नहीं आएगी। वो कंटेंटमेंट आने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। लीडरशिप इसलिए आती है, वो आपसे शुरू होगी लीडरशिप। इट इज़ बाय सोर्स टू फोर्स। लीडरशिप बाय फोर्स टू सोर्स नहीं आती। प्रशिक्षण चाहिए, प्रशिक्षण ज़रूर चाहिए, लेकिन पहले आपके शरीर में खुद को ही तय करना होगा। मन गुरु और शिष्य करे अपना ही दास्य, ऐसे करोगे तभी बात बनेगी। जब तक आप खुद के गुलाम नहीं बनते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये जो चेंज है, उस चेंज की बात समझ में रखो। 1947 टू AK-47 ऐसा पॉलिटिकल चेंज होता रहा भारत में, और हिंदी फिल्मों में दिल एक मंदिर से लेकर दिल तो पागल है, यहाँ तक हो रहा। ये चेंज और अच्छा नहीं है। दिल एक मंदिर, प्यार करने का तरीका भी कैसे था, डिवाइन था। दिल एक मंदिर इस फिल्म का नाम था। अब ये मेंटल हॉस्पिटल में जाने लगे सब, दिल तो पागल है करके। इसलिए कोशिश करो, मैं जो बात बोल रहा हूँ समझने की। मैं हर बार कहता हूँ, मेरे सभी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तब, कि वो दुर्गा कैफे के पास जाके वहाँ पे, ये उम्र नहीं है इस तरह से बर्ताव करने की, जिस तरह से बर्ताव किया जाता है। वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बर्ताव लीडरशिप का होना चाहिए। तो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। तुम कहोगे बाहर शोरमा कल्चर के पास जो मेरी लस्सी बस्सी के पास जो मेरा बिहेवियर है, आई विल कंटिन्यू दैट बिहेवियर द मोमेंट आई एंटर इनटू द कैंपस। यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट अ लीडर। यहाँ से शुरुआत है लीडरशिप की। मुझे मिला था एक लड़का इस बिल्डिंग, ज्ञानेश्वर बिल्डिंग के उस तरफ, किसी लड़की के गले में हाथ डाल के कॉलेज के कैंपस में जा रहा था। तो मैंने उसे ऐसे बुलाया उसको, और मैंने पूछा उसको, अरे ये पाषाण लेक कहाँ पे है? तो उसने बोला, ये नहीं है अंकल पाषाण, पाषाण लेक वहाँ पे है, चांदनी चौक से उधर आगे आके पाषाण लेक है। मैं बोला फिर ये क्या है? तो लड़का मुझे कहता है ये यूनिवर्सिटी है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी है। तो बोला यहाँ सिखाया जाता है क्या? तो बोला हाँ यहाँ सिखाया जाता है। तो बोला यही सिखाया जाता है क्या? कंधे पे हाथ रखने पे ऑब्जेक्शन नहीं है, लोकेशन क्या है उस पर निर्भर करता है। स्थान बदल हो गया तो आपका आवेश बदलना चाहिए, आपका वेश बदलना चाहिए, आपका कर्म बदलना चाहिए, आपकी बुद्धि बदलनी चाहिए, फिर परिणाम बदलेगा। मेरी मर्जी करके आप करोगे तो नहीं चलेगा। स्वैराचार लीडरशिप नहीं है, स्वतंत्र लीडरशिप है। खुद के तंत्र तैयार करो, फिर लीडरशिप बनेगी, तब तक नहीं बनेगी। और ये मालूम नहीं, कई लोग आपके साथ ऐसी बात करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात तो ध्यान में रखनी चाहिए। नहीं, मैंने घड़ी देखी, अब थोड़ा हंसते हैं। लीडरशिप के लिए हंसना भी जरूरी है। स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। ये जो हंसना है वो ध्यान रखो, दिमाग को बिल्कुल अच्छा बनाने के लिए आपको इसकी आवश्यकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के जो लोग हैं यहाँ मराठी बैठे हुए, उनको पता चलेगा। जगत गुरु तुकाराम महाराज कहते हैं, मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धिन से कारण, सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कितने जन यहाँ बैठे जिनको मराठी नहीं आती, वो हाथ ऊपर करो। जिनको मराठी नहीं समझती वो हाथ ऊपर करो, मुझे दिखाई देने दो। बहुत सारे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर लीडर बनना है तो मराठी सीख लो। मराठी भाषा करके सीख लो। ये कोई राजकीय मुद्दा नहीं है, पहले भाषा करके सीख लो, अच्छी भाषा है। मुझे आज जब मैं हिंदी में इतनी देर बात कर रहा हूँ, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। मेरे हिंदी शब्दों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैं हूँ महाराष्ट्रियन, मराठी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। लेकिन फिर भी 3 साल तक नव भारत टाइम्स जोर से पढ़ता रहा घर में, क्योंकि मेरे मुख में हिंदी की जो लहजा है वो अंदर आना चाहिए। समझने के लिए शब्दों की संख्या बढ़नी चाहिए। लीडरशिप का मतलब ये है, आप जो बोल रहे हो कि चलो कैंपस में आ गए एक प्रोग्राम कर दिया, ऐसे नहीं होता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। हिंदी, कन्नड़, जो भी भाषाएं भारत में, वो सीखने की कोशिश करो। सोशल लीडरशिप में ये सब आता है, ध्यान में रखो। और
कई वक्ता लोग आएंगे आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन ये जो खुद की ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी अच्छी बनाने के जो तरीके हैं वो मैंने कर लिए। मेरी मस्त बिंदा 24 तास। मैं कन्नड़ बात करता हूँ थोड़ा थोड़ा, मैं तमिल बात करता हूँ थोड़ा थोड़ा, गुजराती में भी छः आवड़े छः, ये सब चीज़ें करता हूँ। क्योंकि भाषा के साथ जो दोस्ती बनोगी तभी लीडर बनेगा, नहीं तो लीडर नहीं बनता है। मेरे घर में जब चोरी हुई तो कर्नाटक से आया हुआ चोर था और मुझे कन्नड़ ड्रामा में काम किया था मैंने, इसलिए एक डायलॉग मुझे आता था। यहाँ कोई कन्नड़ आने वाले बैठे होंगे वो समझ जाएंगे। पर्वत बाणी नाम का लेखक है, उसका ड्रामा था अग्गद कोने। तो मैं अग्गद कोने का मतलब फांसी का जो दौर रहता है उसे अग्गद कोने कहते हैं। और मेरा डायलॉग था, आई वॉज अ मर्डरर इन द ड्रामा, और मेरा डायलॉग था जब जज पूछता है कि आपको फांसी देने जा रहे हैं हम, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो एज अ मर्डरर, एज अ क्रिमिनल मैं कहता हूँ जज से कि नान माडिद्रे कोले, न्यू माडिद्रे शिक्षे, देश माडिद्रे धर्म संस्थापन। ऐसे कन्नड़ डायलॉग मेरा था, वो मेरा बाय हार्ट है अभी, लेकिन उसका फ़ायदा होता है। उडुपी होटल में जाता हूँ या शेट्टी के होटल में जाता हूँ और वेटर के साथ ये डायलॉग बोलता हूँ तो वो खुश हो जाता है। वो इडली जल्दी मेरे पास आती है ऑर्डर के, बाकी लोगों से। क्यों? मैं कन्नड़ बोला करके। ये जो भाषा का प्यार है, उस भाषा का प्यार लीडरशिप की तरफ ले जाएगा। अब बाद में देख लो आप यूट्यूब पे जाके, मैंने कितने पॉइंट्स बोले हैं लीडर बनने के, उस पर ध्यान दे दो। इसलिए भाषा आनी चाहिए, अच्छी भाषा आनी चाहिए। मैंने मराठी में जब भगवद गीता लिखी, मैंने वही कोशिश की कि मुझे हिंदी में भी वही गीत लिखना है। वो कैसे लिखा जाए? क्यों? दोस्ती बनानी है, आप लोगों से दोस्ती बनानी है। बहुत सारे अमराठी लोग यहाँ पे बैठे जिनको नहीं आती, जल्दी से जल्दी सीख लो, नहीं तो मुझे मिलने आ जाओ, मैं सिखाऊंगा आपको मराठी। मेरे ऑफिस में आ जाओ, ज्ञानेश्वर बिल्डिंग में दूसरे माले पे। और उसमें फ़ायदा भी है, अगले 2-3 साल में अगर आपका कुछ जम गया और वो लड़की या लड़का अगर महाराष्ट्रियन है और आप महाराष्ट्रियन नहीं हो, तो आपको मराठी आनी चाहिए। घर में जाने के बाद अपने पत्नी की माँ और पत्नी दोनों मराठी में क्या बोल रहे हैं ये तुमको समझना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सास भी कभी बहुत ही वैसे हो जाएगा। ऐ शाबाश, सिटी बजाई वापस किसी ने। लीडरशिप के ये सब गुण इकट्ठा लाने हैं। लीडरशिप इज नॉट एक ही विषय ले लिया। हमारे भगवान भी कैसे हिंदुस्तान में देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन है। बज गई घंटी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन है, उसमें ध्यान में रखो। पहले एक इतना अपना डोमेन एंड वर्टिकल अच्छा करना है कि बस जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये सब बाकी चीज़ें आनी चाहिए। सोशल लीडरशिप का मतलब यहाँ बैठा हुआ हर एक बच्चा जाके बाहर सोशल काम करेगा, ऐसा नहीं है। डोंट टेक इट दिस वे, टेक इट दिस वे। मैं मेरे चेहरे पे लीडरशिप दिखाई देती है क्या? दैट इज द क्वेश्चन। और वो एक बार दिखाई दी तो बात खत्म हो गई। और लास्ट पॉइंट इतना ही है। मैं आपको एक जोक बोलता हूँ, ध्यान से सुनो, भरपेट हंसो, ऐसा मुंह ऐसा करके मत बैठो, जरा हंसी से चेहरा अच्छा दिखाई देता है। कोकण एरिया में महाराष्ट्र के नारियल के पेड़ के पत्तों से पुराने ज़माने में टॉयलेट बांधते थे लोग। वो पत्ते निकाल के उसके 4 पार्टीशंस करके उससे टॉयलेट बांधते थे, संडास बांधते थे। ये मुद्दा इस जोक में है। अब जोक सुनो। एक बाप अपने बच्चों से कह रहा है कि जॉर्ज वॉशिंगटन के पिताजी ने एक बड़ा पेड़ लगाया था, वो 50 फीट ऊपर गया पेड़, वो किसी ने तोड़ दिया। तो जॉर्ज वॉशिंगटन के पिताजी ने कहा, सच बोलो किसने तोड़ा, मैं माफ़ करूँगा। तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने हाथ ऊपर किया, बोला पिताजी वो मैंने तोड़ा पेड़। तो उसने पिताजी ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि वह सच बोला। ये स्टोरी कहकर ये बाप अपने बच्चों से कहता है कि नदी के किनारे मैंने एक टॉयलेट बांधा हुआ था, नारियल के पत्तों से बनाया हुआ, उसको नदी में किसने गिरा दिया। थोड़े टाइम के बाद एक बच्चा कहता है कि पिताजी वो मैंने धक्का मार के नीचे गिरा है नदी में। तो पिताजी ने उसको दे धनाधन तमाचा मारना शुरू कर दिया। तो बच्चा बोला, पिताजी वॉशिंगटन की तरह सच बोलने के बाद आप माफ़ करने वाले थे, आप मार क्यों रहे हो? तो पिताजी ने कहा, अबे गधे, वॉशिंगटन ने जब पेड़ काटा तब बाप पेड़ पे नहीं बैठा था।
अभी देखो, यही जोक अगर 3 मिनट के बाद मैं वापस कहूँ तो अभी जो आपने प्रतिशत दिया उतना प्रतिशत आप नहीं देते। मेरे भाषण के आखिर में लास्ट विनती है आपको, अगर लीडर बनना है, उसी जोक पे वापस हंसने का दिल तुम्हारे पास अगर नहीं है तो उसी दुख पे वापस रोना भी नहीं है। अगर रोना निश्चित है तो वैरायटी दुख में रखो, एक ही दुख पकड़ के मत रोना, लीडर नहीं बन पाओगे। चलो, माय नेम इज डॉक्टर संजय उपाध्याय, ज्ञानेश्वर बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे पीछे स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की क्लासरूम है, वहाँ पे मेरा ऑफिस है। यहाँ बैठे हुए किसी भी बच्चे को ऐसे लगेगा कि इनसे मिलना चाहिए पर्सनालिटी एमेलियोरेशन के लिए, लीडरशिप के लिए, तो आप ज़रूर आइएगा। मैं सुबह 10:30 11 से लेकर 1:30 बजे तक स्टूडेंट्स के लिए मेंटरशिप का काम करता हूँ। तब तक के लिए अच्छा, बाय, सी यू। वहाँ जाके अगर ये क्या है, लड़का देखने का प्रोग्राम था, वैसे आपने मुझे देख लिया है, अगर लड़का पसंद है तो बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मज़े करो। और मेरा भाषण ख़त्म हो रहा है, जितनी तालियां बजानी है या सीटी बजानी है बजा लो। मेरा भाषण सुन के जो खड़े हो गए उनके लिए धन्यवाद। ओके, और तुम्हारे सीटी को मेरी तरफ से भी सीटी, भाषण खत्म होने की सीटी जो वहां से बजी थी वो यहाँ से भी बजती अब। Huge round of applause for Sanjay Upadhyay sir. What an amazing speech. What an sir, look at that standing ovation. You deserve it. A true captivating, lively dialogue. You are a true magician of words, Dr. Sanjay Upadhyay sir. Thank you so much, dear students. Thanks a lot for that love and appreciation. Thank you so much. Moving on. Quickly settle down, my dear students. We really appreciate your enthusiasm. It's time for a question and answer session. If there are some questions, dear students, please go to the podiums to the right or the next in the Pendol and make sure you are addressing the question to the specific speaker. Tell us your name and the speaker you want him or her to answer the question. Yes. Technical team, please provide some mics to the students there. We have 2 students waiting for questions and answer. Are you ready? Okay. Technical team. Would expect some technical help there. We have a student. Even the cordless mic would do. Hello. Yes, we can hear you. Please tell your name and the question, please. So myself is Govind Tiwari. I'm a first year BBLB student. My question is, how can legal and policy instruments be reformed to prioritize community agency in developmental decision making? So this question is addressed to Ms. Mukta Chaitanya ji? Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. Okay. She can just stand there. Can we also have a cordless on the stage, please? Technical team. Yes. Hello. Sorry. Can you repeat the question? Yes, ma'am. Can you repeat the question? Yes, ma'am. Yeah. How can the legal and policy instruments be reformed to prioritize community agency in developmental decision making? Okay. In the context of, I guess your question is in the context of cyber safety, security and digital literacy, I guess. Yes, ma'am. So, अभी के लिए हमारा जो IT जो law है, it is into reform stage.
वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एंड along with जो globally changes हो रहे हैं in the policies of cyber safety security for children and teenagers. Like you may know, ऑस्ट्रेलिया ने अभी 16 years के नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए साइबर social media platforms are banned in Australia, in Sweden, in many countries. So even in India, we are trying to build such kind of reform strategies where children and teenagers and young adults and women specifically are safe in cyberspace and in digital space, first of all. Secondly, we need a massive program for digital literacy, because we are a society where we are technically literate, we are a techno-savvy people, but we are digitally illiterate society. So we need a very strong program at school level, at college level, at community level, to make people aware about digital literacy, about digital well-being. Because in India, we have a very big digital divide. Only 55% of the population is online. So 45% of the people of this country are not having any kind of access to digital devices or internet or any kind of digital space. So that digital divide is becoming more and more concern. So that is why I guess we need a very strong engagement from society, from officials, from colleges, from educational institutes to build up a digitally strong and digitally literate society. That is what we need in near future. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. We may have one more question from the students, please. Yes, go ahead. Hello, my name is Atharva Shinde. I'm a first year BTech CSE student. And my question here is regarding the policies of the government regarding our data privacy, which in recent times, you might have heard of the recent tax bill, which actually hides some of the data privacy issues, which are actually very detrimental to our privacy, very much so regarding any kind of text or private messages. And I just want to ask how we can influence these policies in a positive manner, of course. Hello. It's again, So in regard with data privacy, personal data privacy, we are going to have a very strong law. It is, abhi aa jayega wo, it's not fully functional right now. But data privacy is not in just India, but globally is a very, very big concern right now. क्योंकि जैसे मैंने मेरे लेक्चर में कहा था कि everything from your photograph to your email ID, your password, your tax information, everything is there on online space. And उसकी security is a big issue. So दो तीन चीज़ें मुझे लगता है as a citizen of this country or a citizen of internet we should be aware of. One, जो laws हैं उनके बारे में तो obviously we must get aware of ourselves. पर उसके अलावा एक peer pressure और एक community pressure अभी we need to build. For example, when we are talking about digital footprints of a young adult person from social media platforms or from gaming platforms, अभी क्या हो रहा है कि these platforms don't own these responsibilities. If there is a data breach or there is some sort of a cyber attack, these companies don't own any kind of responsibilities. They are just, you know, they do not have that kind of concerns. So right now, yes, with the new laws and the modification or reforms in the laws, these companies are going to get a very big responsibility on their shoulders. So कई ऐसे अभी laws आ रहे हैं जिनमें अगर आपकी company without knowledge of that consumer आपका data collect कर रही है तो that is an offense.
और अगर आपकी कंपनी पे डेटा ब्रीच होता है या साइबर अटैक होता है और आपकी कंपनी से पर्सनल डेटा की चोरी हो जाती है, then the company has to pay a very big penalty fees. और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको ये ग्राहकों को बताना, कंज्यूमर को बताना इज़ मैंडेटरी दैट द कंपनी इज़ अंडर साइबर अटैक सो दैट द कंज्यूमर कैन और ट्राई टू सेफगार्ड हिज पर्सनल डेटा. सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे अभी लॉ में रिफॉर्मेशन में आ रही है. तो इसके बारे में थोड़ा प्रोएक्टिव होना, थोड़ा उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना ये भी ज़रूरी है. एट द सेम टाइम एज अ टीनेजर और एज अ यंग एडल्ट you should be aware about your own digital footprints, because your digital footprints is not just footprint, it's your identity online. So आपको उसके बारे में भी थोड़ा सतर्क रहना इसके आगे ज़रूरी है. And of course what you're talking about is about WhatsApp's new policy that they said WhatsApp is generally कहते हैं कि everything is encrypted, but in their recent policy or recent statement they mentioned that if the authorities ने अगर हमको कहा कि हमें ये personal communication के details चाहिए तो हम लोग दे देंगे. So that they have made the modifications, and that is a concerning thing. But we need to wait for our own policies to build. अभी तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, तो हमें शायद 1-2 साल रुकना पड़ेगा exactly किस तरीके से policies आ रही है, किस तरीके से reforms हो रहे हैं, क्या changes हो रहे हैं, ये थोड़ा सोचने के लिए अभी 1-2 साल शायद सबको रुकना पड़ेगा. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. We are sorry. I have one more question regarding what she just said, what they just said about companies owing the people who are affected by the data leaks. That's just the private sector. What about the public sector? Like when people get their Aadhaar cards leaked, that's a very big issue. That happened recently, actually. So what about that? Again, yes, your question is absolutely important. Even private sector, even government and public sectors should be under the radar. उनको भी ये responsibility लेना ज़रूरी है. Yes, you mentioned correctly. अभी आधार का डेटा भी छुआ, वहाँ पे 80 lakh लोगों का personal data is leaked, and it is available in deep web, dark web. X पे उसका auction हुआ था, and that was a very disturbing and very concerning thing. So यही मैं कह रही थी कि हमें as a community ये pressure build करना पड़ेगा कि our digital footprints, our data is my own thing, and that should be safeguarded with the agencies, whoever is using them. If they are private, they should be aware कि मेरा data privacy का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं. Even if the government is there, they should take the responsibility कि मेरा data safe है या नहीं है. So whoever is using my data, they should own the responsibility, and they should be make these kind of changes in their policies जो हमारे data को सुरक्षित कर सके. So ये as a citizens of any country or as a citizens of internet हमारी भी थोड़ी सी responsibility कि हम लोग भी ये pressure create करें कि हमारा data आपको सुरक्षित रखना ही पड़ेगा. It is not कि आप हमारा data किसी भी तरीके से use कर सकते हैं और किसी को भी available कर दे सकते हैं. Because your data, as I said, your data is not just you, it's everything about you. So as a community, we also need to stand up and say कि हमारा data privacy is in threat, and उसको आप safeguard करने के लिए strong policies लाओ. ये हमें भी कहना पड़ेगा. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah. Now, to offer the concluding remarks and vote of thanks, may I invite Dr. Anjali Sane, Dean, School of Economics and Commerce, MIT World Peace University, to propose vote of thanks. On behalf of the entire team at MIT World Peace University and the team's Social Leadership Development Program, it is my pleasure to propose the formal vote of thanks to our honorable dignitaries present on the dais today for the first session of the SLDP. I consider it my privilege to thank Mukta ma'am for coming all the way and sparing time from her busy schedule. Please give a huge round of applause to Mukta ma'am
who has re-emphasized the importance of data privacy. And I hope all of you will remember her POV formula, which she has shared with all of us. Pause, zero, and verify, because you leave a digital footprint no matter where you go in digital space. I would also like to formally thank our own family member and our senior advisor, Dr. Sanjay Upadhyay sir. Huge round of applause for our Guru Mitra. He has re-emphasized the power of lateral thinking and the importance of listening, which is extremely important for your own well-being. One sentence which I remember and recollect, which I think everyone should follow, is, if you think you can, but pehle at least think that you can. So we assure you on behalf of all the students that we will think that we can, and we will keep that in mind moving ahead. Dear students, as we come to the end of the session 1, I am reminded of the lines by a famous poet, and the poem is Ruke Na Tu. Dhara hila gagan gunja, nadi baha pavan chala, vijay teri, jyoti si jal jala. Bhuja bhuja fadak fadak, rakt mein dhadak dhadak, dhanush utha prahar kar, tu sabse pehla var kar. Agni si dhadak dhadak, hiran sa sajag sajag, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, थके न तू, रुके न तू, झुके न तू. Move ahead in life, but at the same time, be aware of your responsibilities. With this, we come to the end of session 1 of Social Leadership Development Program. We'll be starting with session 2 shortly. Please be seated in your seats. Once again, a very big thank you to all the dignitaries present on dais. Thank you, ma'am. I request all the dignitaries to hold the SLDP brochure and come forward for a group photograph for our official records. Capturing this beautiful moment, I request them to come forward and hold the SLDP brochure. All the eminent dignitaries here, Dr. Sanjay Upadhyay ji, Ms. Mukta Chaitanya ji, Dr. Prashant Malvadkar sir, Dr. Rajiv Sen Gupta, Dr. Vikram Gaikwad, Dr. Swati Bankar, Dr. Pradnya Deshpande, Dr. Shalini Tolpe, Mr. Jai More, student representative, and the moderator, Dr. Anjali Sane. Thank you so much, dear dignitaries, for sparing time and being with us, guiding our students for this session 1. Now, I invite and call upon Mr. Sharon Patil and Anushka Khedkar to take charge for the next session. Over to you, Sharon and Anushka. Thank you and have a great time. A very good afternoon, ladies and gentlemen. We'll be beginning with the session 2 of SLDP in a very short while. Can you close the mic? Check, check. Check, check.
I request the audience to kindly be seated as we will be beginning with the session 2 very shortly. I request everyone to kindly be seated. We are going to start with the session shortly. I kindly request all the students to kindly come in the pandal. The session 2 will begin shortly. Kindly remain seated, and those who have left, kindly come back. We will be beginning with the session 2 of SLDP very shortly. A very good afternoon, ladies and gentlemen. We now begin the session 2 of SLDP 2025. We are honored to welcome our dignitaries to the Swami Vivekanand Sabha Mandap. Please rise as our esteemed guests make their way to the dais, marking the beginning of a session dedicated to courage, community, and change-making. Let us mark the arrival of esteemed dignitaries by ringing the bell of democracy. This bell represents more than mere traditions. It embodies the very spirit of a collective commitment to democratic values and societal progress that MIT WPU cherishes. We are thrilled to have you with us today as we embark on this important journey of leadership and progress. SLDP 2025. Ladies and gentlemen, I request you to please give a huge round of applause as our dignitaries proceed to the bell ringing ceremony. Each resonant ring is a loud call, urging us to embrace our responsibilities, uphold our vision, and strive tirelessly for the greater good. As its powerful sound fills this hall, may it ignite within all of us a renewed dedication to building a more just, inclusive, and compassionate society. A huge round of applause, ladies and gentlemen. We now invite our dignitaries to take the seats on the dais. Their presence stands as a powerful affirmation of the change when leadership rises from grassroots. Our very special guests for today are Mr. Satyajit Bhatkal, CEO of Pani Foundation, and Ms. Ritu Pandram, Sarpanch from Chhattisgarh. Can we please have a huge round of applause for all our dignitaries, ladies and gentlemen? At MIT WPU, social impact isn't just a mission, it's a practice. One such initiative is Bharatiya Chhatra Sansad, BCS, a pioneering platform that ignites the political awareness and democratic engagement among youth. Let's now watch the short video that captures the spirit
of the impact of this powerful movement. I request the technical team to kindly relay the video. I would like to congratulate the initiatives of the MIT team in organizing its first Indian Parliament student. Bharatiya Chhatra Sanshad, in its decade-long existence, has become an important aspect of ever-evolving educational landscape. MIT ने ये स्कूल ऑफ गवर्नमेंट बनाया और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए यह भारतीय छात्र संसद की कल्पना की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आए, सभी आइडियोलॉजीज के लोग आए, विचारों के लोग आए। भारतीय लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने में युवाओं की भागीदारी बेहद आवश्यक है। देश भर के युवाओं की राजनीति में भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे युवाओं को राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रेरित किया जाए, अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह का मंच कैसे तैयार किया जाए जिससे देश भर के युवा अपनी राजनीतिक सोच को मजबूती से आवाज दे सकें। I heard so many things about this organization, Bharatiya Chhatra Sanshad. सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भारत का विचार है। वर्ष 2005 में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना के साथ से ही इसके संस्थापक डॉक्टर राहुल कराड इन सवालों पर मंथन कर रहे थे। परिणाम स्वरूप 2011 में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट की गंगोत्री से भारतीय छात्र संसद यानी BCS का जन्म हुआ। मैं राहुल जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि वो हर साल और हर बार बहुत यशस्वी रूप से वो ये कार्यक्रम करते हैं। वास्तविक ये काम सरकार का है और समाज का। 2011 में भारतीय छात्र संसद का पहला सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया। BCS की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक इसके 14 वार्षिक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। इसमें देश के सभी राज्यों के 450 विश्वविद्यालयों के लगभग 10,000 युवा हिस्सा लेते हैं। भारतीय छात्र संसद के मंच पर हर साल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की बड़ी हस्तियां छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं। दुनिया मानती है यूनिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन यूनिफॉर्मिटी इज देयर। भारत नहीं मानता। भारत कहता है यूनिफॉर्मिटी इज नॉट नेसेसरी फॉर यूनिटी। पिछले 14 सालों में भारतीय छात्र संसद से अब तक देश विदेश की 500 से ज्यादा अधिक हस्तियां जुड़ चुकी हैं। पिछले 14 साल में भारतीय छात्र संसद युवाओं की सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरा है। Youth Parliament concept initiation has happened from this very center of the country, MIT World Peace University, MIT School of Government, my dear friends. आज भारतीय छात्र संसद युवाओं के भरोसे का प्राण बन चुका है, जो हर साल हजारों युवाओं को नेतृत्व की प्रेरणा देकर राजनीति में उनका मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भारतीय छात्र संसद से प्रेरणा लेकर अब देश के दूसरे राज्यों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। आज पूरे देश को भारतीय छात्र संसद पर गर्व है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा युवा आज BCS का हिस्सा है। Can we have a round of applause for Bharatiya Chhatra Sansad? In a world that often celebrates loud voices, today we pause to celebrate grounded voices. Leaders who don't just command attention, but quietly earn it through their everyday commitment to people, progress, and purpose. To set the tone for today's session, let's watch a brief video that celebrates the theme of community-led change and leadership from the heart of Indian villages. I request the technical team to kindly relay the theme video. India's story of transformation is incomplete without its unsung heroes. Those who rise from villages, basti and mohalla,
not through power, but through purpose. Welcome to Stories of Community Leadership and Grassroots Empowerment, where compassion and courage redefine development at the last mile. From self-help groups and panchayat leaders to youth volunteers and citizen activists, these champions bridge inequalities, spark local innovation, and build resilient ecosystems of trust. Their journeys remind us that sustainable change in India begins from within, through shared action, collective dignity, and people-led development. This session invites you to engage with real stories of grassroots leadership that inspire hope, resilience, and agency. Witness how ordinary citizens become extraordinary leaders, proving every day that change isn't given, it's made together. We are the change. We are the leadership. To formally welcome our guest and introduce the concept of today's session, we now invite esteemed moderator, Dr. Urvashi Makar Ma'am, Dean of Ramcharan School of Leadership, MIT WPU. Can we please have a huge round of applause for her, ladies and gentlemen? Good afternoon, everyone. The distinguished guests of today's session, the various deans, the academic leaders on the dais, the convener of SLDP, and of course, our dear students. It's a pleasure to welcome you to this thought-provoking, powerful session on Communities for Change, Stories of Community Leadership and Grassroots Empowerment. As a part of the Social Leadership Development Program here at MIT World Peace University. My dear students, SLDP has been designed with a very clear intention to develop leaders who are not only professionally capable, but socially rooted. It encourages young minds to understand real-world challenges, to engage with the complexities of governance and development. This particular session reflects that spirit, bringing us face to face with individuals who have made a deep impact through grounded, people-centric leadership. We are really fortunate to be joined by two distinguished guests whose work exemplifies the power of community action. My dear students, please join me in huge applause for welcoming Mr. Satyajit Bhatkal, CEO of Pani Foundation, who first came into national spotlight as the director of Satyamev Jayate, the landmark television series produced by Amir Khan and Kiran Rao. Through that platform, he brought many pressing social issues into public consciousness. Taking that work forward, he founded Pani Foundation, where his focus shifted from awareness to direct engagement. Through Satyamev Jayate Water Cup, he has enabled thousands of villagers across Maharashtra to address the drought and water scarcity through training, collaboration, and ownership, without financial subsidies, but with deep commitment. My dear students, it's really an honor to have him on the dais, sharing with all of us the frame. I'm sure all of us are excited to listen his inspiring stories of leadership. Also with us is Ms. Ritu Pandram, the dynamic Sarpanch of Sarbahara village in Chhattisgarh. Please join me in welcoming her to the campus, whose leadership has led to tangible improvements in healthcare, education, sanitation, and women's participation and governance. Her work reminds us that democracy thrives
when it begins in the smallest of units with sarpanches, ward members, and local citizens, working together for collective good. Both of these speakers today remind us that community leadership is not about the titles, my dear students. It is about action. It is about working with people, for people, listening to their problems, enabling and walking alongside them through the change. I invite you all to engage with curiosity and reflection as we listen to their stories. May this session inspire all of us to see leadership not only as a role to aspire to, but as a responsibility to live by. My dear students, each one of us has to take charge of our specific areas of impact today and create change and adopt the model of self-leadership. And that style of leadership is only going to survive tomorrow, which comes from the self-drive. Hence, I remember here a few lines of one of the poems which I penned down during my childhood days. हिम्मत को मत हार मुसाफिर, हिम्मत को मत हार. हिम्मत को मत हार मुसाफिर, हिम्मत को मत हार. छोड़ दे चप्पू, छोड़ दे नैया, बन जा अपना आप खवैया. हिम्मत को मत हार मुसाफिर, हिम्मत को मत हार. भृगुटी तान कर राणा जैसी ले नंगी तलवार. भृगुटी तानकर राणा जैसी ले नंगी तलवार. फिर क्या कोई ठहर सकेगा, सुन तेरी ललकार. हिम्मत को मत हार मुसाफिर, हिम्मत को मत हार. With this spirit, let us start this engaging and powerful session with two powerful personalities here. So, here to both of them. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. I now request all our dignitaries to kindly rise as we are about to felicitate our guests for today. It is our privilege to felicitate two change makers whose lives and leadership inspire hope and action. First, we felicitate Mr. Satyajit Bhatkal sir, CEO of Pani Foundation and creator of acclaimed television series Satyamay Jayate. His groundbreaking work in water conservation has empowered thousands of villages across Maharashtra. Can we please have a huge round of applause, ladies and gentlemen? Next, we felicitate Ms. Ritu Pandram, Sarpanch of Sarbhara village, Chhattisgarh. At just 24, she is her state's youngest Sarpanch, redefining what grassroots leadership looks like in today's India. Can we please have a huge round of applause for Ms. Ritu, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen, it's an honor to introduce our first speaker, Mr. Satyajit Bhatkal sir. From being a lawyer to a filmmaker and now a change maker, Mr. Bhatkal's journey has been one of the relentless service. Through Satyamay Vijayate, he ignited national conversations on social justice. Through Pani Foundation, he mobilized over 4,000 villages to conserve water and reclaim dignity. Let's watch a short video that showcases his inspiring work. I request the technical team to kindly relay the video on Mr. Satyajit Bhatkal sir. Indian television and film director Shri Satyajit Bhatkal is best known as the creator of the Indian talk show Satyamay Jayate, featuring actor Aamir Khan. Born and raised in Mumbai, he first practiced law for over a decade. As a student and as a young lawyer, he was actively involved in important social and political causes and wrote extensively on these issues. After his experiences as an activist and as a lawyer led him to believe he had a story to tell, and in his mid-30s, he quit law to work in film and television. He also wrote and directed Bombay Lawyers,
a critically acclaimed mini-series broadcast on NDTV India, which dealt with important social issues in the format of fictionalized courtroom drama. He has also written and directed the film named Zokamon, starring Darshil Safari in the lead role. He is best known as director of Satyamyu Jayate, a TV show focused on addressing social issues in India. He is CEO of Pani Foundation, a non-profit founded by Amir Khan and Kiran Rao, aimed at making Maharashtra drought-free. We warmly welcome Shri Satyajit Bhatkal. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Yeah, I'm good. So at the outset, many thanks to the SLDP team for inviting me here. Most grateful for the invitation and looking forward to this conversation. A request for whatever it's worth. If there can be a little more silence behind, it'll be easier for me to concentrate because I don't have a written speech. I'll be making it up as I go along. So it's nice to feel that I'm being heard. I'm going to start not by talking about Pani Foundation or about my work, but I want to talk a little bit about what I feel are pressing challenges for all of us, of all age groups, but especially if you're a young person, I think these questions are going to define your lives. And the questions, there are two big challenges, I think, which are going to define the lives of anyone who's alive today, but in particularly, I would say, young people. The first is artificial intelligence, AI. Today, AI is a toy. We are all enjoying using AI. We are using AI for every little thing, for decisions, where to go, what to do, what course to select. We are using it for assignments. We are using it to make poems. We are using it to write mail. It's almost as if a whole bunch of things which were done by people applying their minds, now we are happy to leave it to AI in order to do. And is it fun? Yeah, sure it's fun. Is it powerful? Yes, it is. Is it a force which any of us can control? But I think the answer is no. And because this is a force that is completely out of the control of all of us, I think the challenge that all of us are going to face is how AI is now going to make decisions for us. Today, we are thinking that we are making decisions using AI. But the day is not far when AI will be making decisions which we may not like and which determine our lives. The most obvious and in-your-face ones are regarding employment. At least some of you all must have enrolled to become engineers. And I'm sure at least some of the engineers would like to work in IT and in software. We are all aware of what's happening globally. What's happening with the biggest tech companies all over the world is that by the tens and thousands, people with very, very serious skills, skills in coding, skills in software architecture are just not required. And this is not happening only in IT. This is happening in music, it's happening in the arts, it's happening in filmmaking, it's happening in law, it's happening in accountancy. So there are increasing areas of work which are being cannibalized by machines and machine learning. And the machines are replacing us as human beings. This is just one of the many challenges which AI is going to pose for us. The other challenge, which I think is going to define the lives of everybody on this planet, is the challenge caused by climate change. I'm sure many of us have seen the images of Uttarkashi,
where an entire village was swept away. An entire village. A few years back, we had gigantic floods also in Uttarakhand, at Kedarnath. And we are seeing these kind of climate change related events happening in Himachal Pradesh, in Maharashtra, in the south, all over the place. We are seeing cataclysmic events. If we are under the impression that these are exceptions, they are not. They are the rule, and this is going to keep increasing in the years to come. So I think as young people entering an educational institution with very, very exciting life in front of us, I think it's useful to dwell on this, not to get depressed, but in order to be aware of the challenges and opportunities in the days to come. Because despite AI and despite climate change, we as a species continue to live, to survive, to have needs. And in our country, despite the fact that on the one hand we are technologically so advanced, the most basic needs of human beings, roti, kapda, makan, sehat, shiksha, इनमें से कोई भी जरूरत ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है. बहुत बड़े स्केल पर ये सभी समस्याएं आज भी उतनी ही तीव्र है जितनी पहले थी. And the reason I'm mentioning this is because in this era of tremendous change, the awareness of this might give us some pointers as to what we as young people could be looking at, not only as our passion but also as our profession. So with this little bit of a preface, I'm going to go into the meat of what I was going to speak about, which is my own journey. As the introduction explained, I am essentially a filmmaker. I've worked for many years in television and film. And around 12 years back, I directed a show called Satyamev Jayate, which roughly speaking you can call a talk show, which had Amir Khan as its host. Perhaps some of you all were too young at that point in time to see the show. Perhaps some of you all have seen the show. But broadly, you can say that the show dealt with social issues. Each topic was on one specific social issue. हमने ये शो जब बनाया तब मन में ये बात थी कि ठीक है हम लोग शो बना रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि शो के जरिए कहीं हम समाज में कुछ सकारात्मक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं क्या. तो जितने भी टॉपिक थे, कोशिश ये थी कि सिर्फ समस्या न बताएं, लेकिन समस्या का क्या हल हो सकता है, इस पर खास तौर से ध्यान दें. और ताज्जुब की बात यह थी कि जब हमने शो बनाया तब हमने देखा कि लोगों ने बड़ी तादाद में शो तो देखा, लेकिन साथ साथ जो हल था, जो सॉल्यूशन था, उस पर बहुत बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंटेशन का भी काम हम लोगों ने अलग अलग लेवल पर देखा. सरकार के लेवल पर देखा, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पर देखा, कॉरपोरेट्स के लेवल पर देखा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आम लोगों के अंदर भी हमने देखा कि कई सारी ऐसी चीज़ें थी कि जहां आम लोग उस शो के वजह से कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव उन्होंने शुरू किया. इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. हमने एक शो बनाया था, उसका टॉपिक था अल्कोहलिज्म, शराबियत. और शो का थ्रस्ट ये था कि डोंट ब्लेम द अल्कोहलिक बिकॉज अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज. अब शराबी को शराबी कह के उसको आप नीचा दिखा के आप ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते. उसको मदद की ज़रूरत है क्योंकि इट्स अ डिजीज, वो भी एक रोग है और इस पर इलाज है. ये इलाज अल्कोहलिक्स अनोनिमस फ्री ऑफ चार्ज करता है और ये रहा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नंबर. तो शो में AA का नंबर हम लोगों ने दिया और करीब 2 या 3 हफ्तों में 3.5 लाख शराबी रजिस्टर हुए इस मकसद से कि वो छोड़ना चाहते थे शराब. एंड दिस बिकेम
द लार्जेस्ट प्रोग्राम इन द हिस्ट्री ऑफ ए, कि कहीं भी इतनी बड़ी तादाद में इतने ज़्यादा शराबी रजिस्टर नहीं हुए थे टू गेट इनटू रिहैबिलिटेशन। तो हमें यह महसूस हुआ कि कम्युनिकेशन की वजह से ज़रूर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट हम लोग और देखना चाहते थे, टटोलना चाहते थे कि इससे क्या हो सकता है और क्या कर सकते हैं हम। क्योंकि एक बात हमें स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही थी कि शो हालांकि परिणामकारक था, लेकिन उसकी सीमाएं कई ज्यादा थी। देयर वर लॉट ऑफ लिमिट्स टू द शो। और सबसे बड़ा लिमिट ये होता है कि हर हफ्ते आप नया टॉपिक करते हैं, एंड इफ यू आर डूइंग अ डिफरेंट टॉपिक एवरी वीक, देयर इज नो कंटिन्यूटी, देयर इज नो परसिस्टेंस। और आपको अगर इम्पैक्ट लाना है तो आपको एक टॉपिक लेके कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। तो इसलिए हमने तय किया कि हम लोग शो बंद करेंगे और एज कम्युनिकेटर्स काम करेंगे, लेकिन सिर्फ एक टॉपिक लेकर काम करेंगे। और जैसा भी पानी फाउंडेशन का नाम है, हम लोगों ने तय किया कि हमें पानी इस विषय पर काम करना है और महाराष्ट्र में काम करना है, क्योंकि महाराष्ट्र में हर साल सूखा पड़ रहा था, हालात बहुत खराब थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपना गांव छोड़कर शहर सिर्फ इसलिए आना पड़ रहा था क्योंकि गांव में बिल्कुल पानी नहीं है। न पीने के लिए पानी है, न खेती के लिए पानी है, न जानवरों के लिए पानी है। लेकिन ये क्यों? क्योंकि इसका हल जो है वो बहुत आसान है, सस्ता है, और इस विषय में महाराष्ट्र पायनियर है। शायद आप में से कई ज्यादा लोगों ने अन्ना हजारे जी का नाम सुना होगा। अन्ना हजारे जी, उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत पानी के काम से हुई, जो उनके गांव राड़ेगंज सिद्धि में उन्होंने किया। और इस काम का नाम है वाटरशेड मैनेजमेंट, पाणलोट विकास इसको मराठी में कहते हैं। इस काम के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन ये काम फिर भी कुछ गिने चुने गांवों में ही हुआ था। तो हम लोग ने अपने आप से ये सवाल पूछा कि जब सॉल्यूशन सब जानते हैं, सॉल्यूशन का प्रूफ है, सॉल्यूशन के लिए पैसे नहीं लगते, टेक्नोलॉजी नहीं लगती, तो फिर लोग क्यों नहीं कर रहे? और उसका जवाब सिर्फ एक चीज में है कि आपको पानी का काम अगर सक्सेसफुली करना है तो आपके गांव को अंदर आपको एकजुट निर्माण करनी पड़ेगी। गांव अगर एक साथ नहीं आता है तो ये काम हो नहीं सकता। तो इस काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गांव का इकट्ठा होना, सोशल यूनिटी। मतलब पानी को पीने के लिए जिस तरह से उंगलियों को साथ आना पड़ता है, उसी तरह से आप समझ लीजिए कि समाज का हर घटक जब तक एक साथ नहीं आता है तब तक वो पानी इकट्ठा जमा नहीं हो सकता। तो हमने तय किया कि एज कम्युनिकेटर्स क्या हम कुछ कर सकते हैं लोगों को एक साथ लाने के लिए। तो हमने तय किया कि एक कोशिश तो करते हैं, लेट अस सी कि एज कम्युनिकेटर्स ये काम हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने तय कर ली कि हम लोग लेक्चर नहीं देंगे, ज्ञान नहीं बांटेंगे, क्योंकि कोई भी लेक्चर सुनना नहीं चाहता, सब लोग कंटाल जाते हैं। बट कैन वी मेक इट मजेदार, कैन वी मेक इट कूल, कैन वी मेक इट एस्पिरेशनल, ताकि लोगों को मजा आएगा। नहीं, मैं भी ये करना चाहता हूं, मैं भी ये करना चाहती हूं। ये भावना अगर तैयार हो जाती है तो ये समस्या जो है वो एक आनंद का स्रोत बन सकता है। द प्रॉब्लम कैन बिकम अ सोर्स ऑफ जॉय, ऑफ सेल्फ वैलिडेशन, ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। So how do you do that? So we designed a competition. That competition was called the Satyamev Jayate Water Cup. और ये वाटर कप में भाग किसको लेना है? ग्राम पंचायत को। एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिट विल बी द ग्राम पंचायत। और काम क्या करना है उसके बहुत क्लियर रूल्स बनाए। जिस तरह से क्रिकेट के रूल्स है, बाउंड्री को बॉल गया तो 4 रन्स है, फुल टॉस गया तो 6 रन्स है, लेग बिफोर विकेट है, वैसे ही पानी के लिए जो 10-12 चीजें इंपॉर्टेंट है, हर चीज को हम लोगों ने मार्क्स दिए थे।
रिज टू वैली, माथा से पायथा तक आपको काम करना है और हर काम के लिए अलग मार्क्स है। सो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा उस गांव के नेचुरल रिसोर्सेज का। इस काम के लिए हम लोगों ने कोई फंडिंग नहीं दिया, एक गांव को एक पैसा पानी फाउंडेशन ने नहीं दिया। पूरा काम किसको करना है? गांव को करना है। रिसोर्सेज किसको रेज करनी है? गांव को रिसोर्सेज करनी है। मेहनत किसको करनी है? गांव को मेहनत करनी है। हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ दो चीजें कर रहे हैं। एक, हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसकी जो विद्या है, इसका जो साइंस है वाटरशेड मैनेजमेंट, वो एक 4 डे रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में हम लोगों ने दिया, जिस ट्रेनिंग में गांव को आना कंपलसरी था। 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने थे, ऑफ विच हाफ हैड टू बी विमेन। इफ यू डोंट टर्न अप फॉर ट्रेनिंग, यू आर आउट। और दूसरी बात जो हम कर रहे थे, हम एक कंपटीशन का स्ट्रक्चर दिए और कंपटीशन के स्ट्रक्चर में बड़े प्राइजेस थे। विनिंग ग्राम पंचायत गेट्स 50 lakhs, देन 30 lakhs, देन 20 lakhs। पर काम आपको अपने पैसे से करना है। जस्ट 2 things, motivation and knowledge, and we were checking, do these 2 things combined create impact? क्या लोग भाग लेंगे? कई लोगों ने कहा, यार लोगों को पैसा देने के बाद भी लोग काम नहीं करते, आप कह रहे हैं मुफ्त में काम करो। हम लोगों ने बोला कि समस्या तो उनकी है, तो अगर उनको लगता है कि मेरी समस्या है एंड दे वांट टू टेक ओनरशिप ऑफ द प्रॉब्लम, देन दे विल वर्क। और हुआ भी ठीक ऐसा। पहले ही साल में हम लोगों ने देखा कि हजारों की तादाद में लोगों ने भाग किया, मेहनत की, श्रमदान किया और अपने गांव को बहुत पानीदार किया। और पहले साल में हम लोगों ने सिर्फ 3 तालुका में शुरू हुआ काम, 24 महीने में हम लोग यही काम 76 तालुकास तक हम लोग ले पाए। और महाराष्ट्र के गांवों ने बिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी तैयार किया। ये कैसे किया, इसका क्या मतलब, हाउ डज इट लुक लाइक, ये देखने के लिए आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट अ शॉर्ट वीडियो टू बी प्लेड। प्लीज प्ले द वीडियो। The wheels of time keep turning. Seasons change. The blistering heat of May and June creates a yearning for the rains. And then, every year, the monsoon arrives. Sometimes it is plentiful, sometimes scarce, but come it does every year. And so it did this year too. त्या दिवशी पहिला पूर आला आणि शिशिट्या अशा टुम भरल्या, तळे टुम भरले। सकाळी 7 वाजता जाऊन पूर्ण लोक ते डोंगरा बघून असे उड्या मारत होते, तळे नाचायला, पवायला लागले असे, हे माझं पाणी म्हणून म्हणून। मी जे शेततळ तयार केलं तर ते शेततळ भरलेलं बघून मला आनंद मायलने, मी पहिल्यांदा उडी मारल्यावर बाकीची लेकरं उडी मारले। अनुभव असा म्हणजे की पावसामध्ये पोरांना लगेवर जाऊन शूटिंग केली, एवढं भारी दिसायला की वाटायला लागलं या काम संपायला नाही पाहिजे, तर पूर्ण डोंगर शिवारच निघायला पाहिजे आता। In thousands of Maharashtrian villages, this year, it is as if a miracle occurred. This year, the rainwater did not leave villages. It made its home there. This has been achieved by a people's movement. The fruit of the sweat and toil of those who took on the mission of making their villages water abundant by taking part in the Satyamev Jayate Water Cup contest. Both government and prominent leaders of industry generously supported this people's initiative. The contest started in the year 2016 with just 3 talukas in Maharashtra. Expanded in 2017 to 30 talukas and grew 25 times this year, 2018, to reach 75 talukas across Maharashtra. More than 4,000 villages participated. Over a 2-month period, more than 20,000 villagers were trained in the science of watershed management. These villagers then returned to their villages to sow the seeds of a water revolution.
Water Cup was scheduled to begin on the 8th of April. But from the night of April 7th itself, lakhs of water warriors, fully armed to take on the drought, kept vigil for the battle to begin. At the stroke of midnight, their army launched a determined attack to vanquish drought. A wild dream to free oneself in just 45 days from the shackles of drought with one's own might. People joined hands, putting aside social divisions and old rivalries. With every passing day, the army of water warriors grew. In these 45 days, the rising and setting sun saw many a miracle unfold. Somewhere it was woman power, elsewhere the determination of youth, or even an army of children. मी सर्व विद्यार्थ्यांना तयार केलं व आमची एक घट्ट तुफान सेना तयार करायची. माझी 150 मुलांची टीम आहे. Even seniors, uncaring of their aches and pains, worked obsessively towards a brighter future for coming generations. आम्हाला एक तकलीफ होती. संध्याकाळी अंग दुखतं, पैसा नसतो इंजेक्शनला. तर 2 ला सुटल्यानंतर दुसऱ्याचा रोजगार करायचा, तिथून 4 रुपये आणायचे आणि मग इंजेक्शन करायचं. पण काम नाही सोडलं. जशी सुट्टी घेतलीच नाही. By day, the sun was witness to people's madness, and when by night the baton was handed over to the moon, it saw thousands doing shramdan without a moment's rest. Those 45 days became a festival of labor, full of song, dance, and celebration. By the time the competition came to a close, this grand obsession had transformed the face of entire landscapes. Driven by this collective madness, villagers who had once struggled for a single tanker of water created with their own hands structures that could harvest more than 222 billion liters of water. If filled in tankers of 10,000 liter capacity, this quantity of water would fill more than 22 million tankers. And if these tankers were lined up, they would circumnavigate the earth more than 3 times. It is this human spirit, this determination, that has kept the rains captive in village after village this year. People are celebrating their newfound affinity with water. Nature and mankind are dancing with joy as they become one. Thank you. So this, as you can see, is a 2018 video, and subsequently what we discovered is that in so many villages which had water, the next level of challenge was how to utilize this water. Because if this water is not utilized well, आप कितना भी पानी तैयार करिए, वो पानी टिकने वाला है नहीं. हमारे पानी के क्षेत्र में एक गुरु है, पोपटराव पवार जी, वो बोलते कि जैसा आने वाला पानी है वैसे जाने वाला पानी भी है. तो पानी अगर आप चाहते हैं कि वो टिके, वो न जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो पानी का ठीक इस्तेमाल हो, और पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल खेती में होता है. तो हमने उन लोगों ने तय किया कि अभी हमको खेती में काम करना है इस प्रकार से ताकि किसान को अच्छे पैसे भी मिले और वो कुदरत को साथ साथ उसको भी अच्छी तरह से रखे. It should be ecologically sustainable and economically prosperous farming. And again we decided that the best way to do it is to completely avoid lecture bazi and to bring the same 2 elements together, motivation and knowledge. So we designed another competition. It's called the Satyamev Jayate Farmer Cup. And the concept of the Farmer Cup
is that farmers organize themselves into farmer-producer organizations, and the farmer-producer organizations compete with each other in various things. And the most important thing that they try and do is to reduce costs and improve their profitability. We have now held 3 editions of the Farmer Cup, and each year the number of farmer-producer organizations has doubled. And I'm happy to tell you that we completed the last edition of the Farmer Cup with over half the number of farmer-producer organizations being all women farmer organizations. Namely, all the members of that FPO are women farmers. Often when we think of farming, we think of somebody with a feta and a mustache. But the truth is that 90% of all farming operations, ये काम महिलाएं करती है, पुरुष नहीं करते हैं. तो ये बहुत मुझे लगता है फक्र की बात है कि इतनी सारी महिलाएं अपनी खुद की FPOs बना के सामने आ रही हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी आय पर एकड़ इनकम पहले ही साल में दुगनी हो जाती है. KPMG did an impact assessment report for us and they found that there's a 163% jump in per acre incomes. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 चीज़ें आ रही है. एक है कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किसान इकट्ठा आ रहे हैं, और दूसरा है नॉलेज बेस्ड एग्रीकल्चर. और ये नॉलेज एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स दे रहे हैं जो डिजिटल शेतीशाला उनके साथ काम करते हैं. और अब we are now at the stage where we have now launched, in the month of March, we have launched the Satyameva Jayate Farmer Cup on an all Maharashtra basis. अगले साल ये कंपटीशन हर गांव, हर तालुका, हर ज़िले में होगी. और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी हम लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को भी एक्सपीरियंस मिले और वो स्टूडेंट्स किसानों को जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर के, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस उन तक पहुंचाए. तो इस तरह से एक बड़ी सोशल मूवमेंट बना के खेती, मिट्टी और पानी, कुदरत से जुड़ी ये तीनों चीज़ों के साथ एक काम करने का ये एक प्रयास है. उसके बारे में आपसे बात करने का एक मौका देने के लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद और आपने सुनने के लिए धन्यवाद. थैंक यू. It is truly an inspiring journey. Thank you so much, sir, for your motivational words. Our next speaker is Miss Ritu Pandram ma'am, a beacon of youth-led governance, rising to the position of Sarpanch at 24. She's leading her village in Chhattisgarh with compassion and vision. Let's watch a short video on the journey, one of courage, community service, and hope. I request the technical team to kindly play their video. At 24, Ritu Pandram became the youngest Sarpanch in Chhattisgarh, handling issues ranging from water scarcity to sanitation in Sarbahara village, Bilaspur district. Ritu grew up in a family of farmers. Without a good school in her home village, she had to attend a residential school elsewhere, something that not all families can afford. Indeed, in her case, it was only her father, Uday Singh Pandram's determination, despite his shaky financial position, to educate his 3 children that saw her in school at all. When Pandram finally graduated in Bilaspur, her dream was to crack the civil services examination. Meanwhile, the villagers voted her to power by 300 votes in the 2015 Sarpanch election. For Pandram, being a Sarpanch is about developing the village. Her work includes conducting awareness sessions about laws and regulations aimed to benefit people, such as getting payments through Manrega and getting an Aadhaar card. Good roads, clean drinking water, water harvesting, and sanitation are also on her priority list. We warmly welcome Ritu Pandram. What an inspiring personality. Please join me in welcoming Miss Ritu Pandram ma'am with a huge round of applause. अभी मंच पर आप सभी के समक्ष
मेरा परिचय एक सरपंच के रूप में हुआ, परंतु यहाँ पर मैं इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए बताना चाहूँगी कि मेरा सरपंच का कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है और 2015 से 19 तक मैं छत्तीसगढ़ के यंगेस्ट सरपंच के रूप में मैंने काम किया। क्योंकि आज हम SLDP के आज के इस सेशन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ मंच के नीचे जितने भी युवा बैठे हुए हैं उनमें अथाह ऊर्जा का भंडार है और आप सभी अभी थके हुए नहीं हैं। तो कृपया यदि आप थके हुए नहीं हैं तो एक बार मंच के नीचे से आवाज़ लगाइएगा। क्या थकान हो रही है आप लोगों को? चलिए, ये खुशी की भी बात हो सकती है कि आज का ये सेशन जो है, मैं इस सेशन के अंतिम वक्ता हूँ और अपनी बातों को शुरू करते हुए मैं देश की आर्थिक राजधानी की ख्याति प्राप्त प्रदेश महाराष्ट्र की पावन धरती पुणे की पावन धरा को सादर सेवा जोहार करती हूँ, नमन करती हूँ। साथ ही पुणे के उन तमाम देशभक्त शहीदों को छत्तीसगढ़ की पावन नदियों के तरफ से सेवा जोहार करती हूँ, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही संस्था के संस्थापक परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी, राहुल कराट जी एवं समस्त सम्मानीय संस्थापक सदस्य, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और इस संस्था को इस मुकाम तक पहुंचाकर लेकर आए। मैं इस मंच से आपका आभार व्यक्त करती हूं कि शिक्षा के इस सफ़र में आप जैसे विचारशील जनों ने पेड़ की छांव से लेकर इस शिक्षा के मंदिर रूपी इमारत, जिस इमारत में तमाम विषयों के तमाम संकायों से संबंधित शिक्षा और सुविधाएं यहाँ पर छात्र छात्राओं को दी जाती हैं और यहाँ पर उपस्थित तमाम गुरुजन प्रोफेसर एक मसाल की तरह यहाँ के बच्चों के भविष्य निर्माण में अपना समय दे रहे हैं ताकि इस देश का भविष्य जो है गढ़ा जा सके। साथियों, आज का ये कार्यक्रम चूँकि सामाजिक नेतृत्व का है, सबसे पहली बात सामाजिक नेतृत्व को समझने से पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि असल में समाज क्या है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उस परिभाषा को माने जो मैं आपसे कहूँ समाज के परिप्रेक्ष्य में। मेरी समझ के अनुसार समाज जो होता है एक सामाजिक संबंधों का जाल होता है। सामाजिक संबंध पारिवारिक भी हो सकता है, सामाजिक संबंध शैक्षणिक भी हो सकता है, व्यापारिक भी हो सकता है, राजनैतिक भी हो सकता है। और जब मैं इस समाज सेवा के क्षेत्र में आई तो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं गुणमाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी। चूँकि मैं छत्तीसगढ़ की धरती से आती हूँ, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति बहुत ही सरल और सहज होता है। दादा मरकाम जी ने एक बात मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आकर अपना योगदान दे सकूं। और वो बात यह थी कि जिस समाज में आपने पैदा लिया है, जिस समाज में आपने जन्म लिया है, जिस समाज ने आपको रोटी दी है, जिस समाज ने आपको बेटी दी है, जिस समाज ने आपके जन्म होने पर जन्म संस्कार से लेकर विवाह संस्कार से लेकर जब आप मृत्यु सैया पर लेटेंगे तो यही समाज के वो जो लोग हैं वो कांधा देकर आपके अंतिम समय में साथ होंगे। तो उस समाज के लिए आपने किया क्या है आप, या फिर आप उस समाज के लिए करेंगे क्या? इसलिए सामाजिक नेतृत्व और सामाजिक नेतृत्व की भागीदारी आवश्यक है। आज SLDP में उपस्थित जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है।
छात्रों में देश का भविष्य और देश को बेहतर दिशा में ले जाने का जो भाव है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जब मैं बहुत कम उम्र में सरपंच बनी तो बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा कि लगातार राजनीति में बने रहना शायद हितकर नहीं होगा, राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा मानना है कि राजनीति में यदि अच्छे लोग नहीं जाएंगे, नेतृत्व करने के लिए यदि अच्छा नेतृत्व पैदा नहीं होगा, तो ये तय है कि इस देश के लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा। इसलिए राजनीति में पढ़े लिखे छात्र छात्राओं की भागीदारी उतनी ही जरूरी है। साथियों, आज का ये जो मंच है, आप सभी मंच पर विराजमान जितने भी नामचीन हस्ती हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच पर आकर अपनी बात रखने का मौका मिला। क्योंकि मैं जिस जगह से आती हूँ और जिस जगह से मैंने सामाजिक नेतृत्व को देखा है या राजनीतिक नेतृत्व को देखा है, शहर की राजनीति और ग्रामीण परिवेश की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। आपको जब आप नेतृत्व की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि नेतृत्व का जो सृजन है सबसे पहले वो आपके अंदर होता है। आप ही हैं जो आपके अंदर के नेतृत्व को पैदा कर सकते हैं। कोई संस्था, कोई महाविद्यालय या कोई महाविद्यालय आपके नेतृत्व में निखार जरूर ला सकता है साथियों, परंतु आपके अंदर नेतृत्व का सृजन आपको स्वयं ही करना पड़ता है। और जब आप अपने आप से उस नेतृत्व की बात करेंगे तो सबसे बड़ा विरोधी आप स्वयं होंगे अपने लिए। सबसे पहला द्वंद्व आपका होगा अपने साथ। जब आप कुछ काम करने के लिए निकलेंगे तो आपका ही सबसे बड़ा जो विरोधी होगा वो आप स्वयं होंगे। परिवार बाद में आएगा, समाज के लोग बाद में आएंगे, शहर नगर और राष्ट्र के लोग बाद में आएंगे, परंतु जब आप अपने आप से जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से इस समाज का बेहतर नेतृत्व कर सकेंगे। आज मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु हम जिन सामाजिक विरासतों को, जिन सांस्कृतिक विरासतों को, जिन रीति रिवाजों को सहेजने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके संरक्षण के लिए एक सामाजिक नेतृत्व की आवश्यकता तो पड़ी होगी। और इसलिए कई बुद्धिजीवी इस बात को कहते हैं कि लीडरशिप का जो गुण है, नेतृत्व का जो गुण है, वो नेचुरल होता है। मैं भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करती थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि यदि समाज और देश के बेहतर विकास में यदि मेरे कुछ शब्द बोलने से या कुछ काम करने से कोई बदलाव आता है, कोई परिवर्तन आता है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो योगदान अपने समाज के हित में, अपने देश के हित में देना चाहिए। क्योंकि मेरे जो मार्गदर्शक रहे हैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी, उनका कहना था इस देश की राजनीति में एक आदिवासी जो समुदाय है, जिन्हें कहा गया कि ये जंगलों में निवास करते हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं उस विकसित दुनिया से अलग नजर आते हैं। उनमें भी वो नेतृत्व क्षमता है। देश के उन तमाम नेतृत्वकर्ताओं को मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम की भावना से उन तमाम समुदायों को देखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम की भावना से काम नहीं करेंगे, मुझे लगता है आज आप सभी युवाओं में ऊर्जा है, बल है, तेज है, बुद्धि है, विचार है,
और जब ये आपके विचार जब ये कर्म में परिवर्तित होंगे साथियों, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस देश को विश्व गुरु बनने से रोक सकता है। आपका जो संघर्ष है, आपको आज के इस मंच से संकल्प लेकर जाना चाहिए। एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, क्योंकि मैं पुणे की धरती पर खड़ी हूँ, आप सब उनसे बेहतर परिचित होंगे। कई फिल्मों में उन्होंने कई गाने भी दिए। गोपाल दास नीरज जी, उनकी एक किताब है नीरज की पाती, जिसमें वो लिखते हैं कि गर कलम न छीनी गई तो हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे, इंसान क्या है दुनिया का भगवान बदल कर छोड़ेंगे, हम अंगारे ही अंगारे गाएंगे जब तक दिन मान न निकलेगा, हम अंगारे ही अंगारे गाएंगे जब तक दिन मान न निकलेगा, आंधी खुद बन जाएंगे जब तक तूफान न निकलेगा। तो संघर्ष की शुरुआत, सामाजिक नेतृत्व की शुरुआत ये आपको अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी साथियों। आप इस देश का भविष्य हैं, इस देश की उम्मीदें हैं। हमारे तमाम जो वक्ता इस मंच पर आए, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर उन तमाम बातों को इस मंच से रखा। नेतृत्व का गुण क्या होना चाहिए, उन बातों को इस मंच से रखा। और मुझे लगता है कि विश्व शांति विश्वविद्यालय का ये मंच, जिन्होंने इस बात की चुनौती को स्वीकार किया है कि नेतृत्व कोई पैदाइशी गुण नहीं होता, नेतृत्व हर व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ होता है। आप जब अपना नेतृत्व स्वयं स्वीकार करेंगे, यदि आपके अंदर वो क्षमता नहीं हुई कि आप स्वयं का नेतृत्व स्वीकार कर सकें, तो बाहर की दुनिया आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पाएगी। जब आप अपने आप से द्वंद्व जीत जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका परिवार आपका नेतृत्व स्वीकार करेगा। आप जिस समाज में रहते हैं, जिस मानव समाज में रहते हैं, वो समाज आपका नेतृत्व स्वीकार करेगा। जिस नगर, जिस शहर और जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, वो आपका नेतृत्व स्वीकार करेगा। और मुझे लगता है कि युवाओं में नए विचार होते हैं, और अच्छे विचारों वाला व्यक्ति यदि वो पढ़ा लिखा शिक्षित हुआ, तो देश को संकट के समय ऐसे शिक्षित युवाओं पर भरोसा करके उनके कांधे पर ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो आप इस देश का भविष्य हैं। आप के अंदर जो विश्वविद्यालय ने प्रयास किया है कि उस नेतृत्व क्षमता को निखारने का, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय पहल है। क्योंकि आज का ये SLDP का अंतिम सेशन है, और हमारे जितने भी मंच से नीचे बैठे हमारे युवा साथी हैं, आज के इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से कुछ सीख कर जाएंगे। मैंने जब अपनी शुरुआत की थी, मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में एक मेरी जो जर्नी है उसकी कहानी मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं सरपंच बनी, तो लोगों ने कहा कि आप एक प्रशासनिक सेवक के रूप में काम करना चाहती थीं। आपने जिस क्षेत्र को चुना है, हो सकता है उस क्षेत्र में बहुत दिक्कतें आएं, पर मुझे लगता है कि जब शहर की चकाचौंध जिंदगी में जब व्यक्ति अपने वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, देश का एक कोना ऐसा भी है साथियों जहां इंसान जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, और इस बात को आपको इस मंच से जानने की ज़रूरत है। इस मंच से जानने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि ये इस मंच के नीचे बैठे वो युवा जब इस देश का नेतृत्व करेंगे, तो उस संघर्ष के साथी बनेंगे। जो व्यक्ति आज ग्रामीण परिवेश में, जो जंगलों में जीवन यापन कर रहा है और जद्दोजहद की जिंदगी जी रहा है, जो अशिक्षा से परेशान है, जो गरीबी से परेशान है,
जो बेरोजगारी से परेशान हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाओं से परेशान हैं। जब आप समाज का बेहतर नेतृत्व करेंगे तो मुझे लगता है कि आप उन ऐसे वंचित लोगों के देश के उस विकास की उस रास्ते तक लेकर आएंगे जहां पर आज तक किसी की नजर नहीं जा सकी। मेरा मानना है कि इस देश में जब हम चुनाव प्रक्रिया में एक साथ भागीदारी लेते हैं या उस चुनाव प्रक्रिया का एक साथ हिस्सा बनते हैं तो ग्रामीण परिवेश का जो व्यक्ति है, जो जंगलों में रहने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेता है। उस एक व्यक्ति का वोट का महत्व जो है वही है जो इस देश के पूंजीपति व्यक्ति का वोट का महत्व है। परंतु सुविधाओं में अंतर है साथियों, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि देश का यदि एक नागरिक है तो उनकी सुविधाओं में अंतर क्यों। देश के प्रत्येक कोने कोने से व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा, शिक्षित, ईमानदार, अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था ने उनको बना पाया तो निश्चित रूप से इस देश के भाग्य को निर्माण करने में, इस देश को सजाने में, इस देश को संवारने में, जिस गांव में वो पैदा लिया, जिस शहर में पैदा लिया, जिस नगर में पैदा लिया, उसकी रूपरेखा को बदलने के लिए वो भी भागीदार बन सकेगा। साथियों, आज के इस मंच से मैं SLDP के आज के सेशन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, आप सभी का सादर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैंने अपने संबोधन के दौरान आप सभी को सेवा जोहार कहकर संबोधित किया। साथियों, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। कई लोगों को बहुत नया शब्द लगा होगा कि ये सेवा जोहार क्या है। जब आप सामाजिक नेतृत्व की बात करते हैं तो आपके अंदर नेतृत्व का गुण होने के साथ साथ यदि आप में संवेदनाएं नहीं होंगी, यदि आप में सेवा भाव नहीं होगा तो उस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है। साथियों, यदि आपके अंदर संवेदनाएं नहीं है तो निश्चित रूप से आप कभी ना कभी उस गलत रास्ते पे जाएंगे। आप जब नेतृत्व पे उतरेंगे तो आप ये मानकर चलेंगे कि सत्ता स्थायी है, परंतु आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सत्ता स्थायी नहीं है। साथियों, यदि आप सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने जाएंगे तो वो अहंकार को जन्म देगा। अहंकार आपको अपनी आलोचना सुनने से रोकेगा, आप अपने आलोचकों को पाबंदी लगाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी तरह की नेतृत्व की बात करें तो आप उसमें संवेदना और सेवा भाव को जरूर शामिल करें। मैंने सेवा जोहार कहा, उस सेवा का मतलब है कि अपने माता पिता की सेवा, अपने पशु पक्षियों की सेवा, अपने जल जंगल जमीन की सेवा, आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस मानव समाज में रह रहे हैं, उस मानव समाज के प्रत्येक मानव के प्रति सेवा भाव, और यही मतलब है इस सेवा जोहार का। तो अंत में मैं पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बार पुनः सादर सेवा जोहार करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। जय सेवा, जय जोहार, जय महाराष्ट्र, जय छत्तीसगढ़। Thank you so much, man, for your inspiring words. We will now have a question and answer session where our students will be able to ask and clarify questions that might have arisen in their minds during this session. If you have any questions you would like to ask, please approach one of the volunteers present at your nearest podiums. You will be allowed to ask your questions from there. And it's a humble request to both the guest and the student to keep the question short and the answer short as well, so that we can take in more questions. We have someone on the left podium. You can go ahead with your question, please. Good afternoon. I am Divyansh Rajpal, first year student of BBA LLB, and my question is for Satyajit sir. What challenges have grassroots leaders faced in implementing change, and how have they overcome them on the grounds?
So this is challenge number one, getting a mic on. But jokes apart, I think the biggest challenge in grassroots work is the fact that बहुत बड़े पैमाने पर people have lost faith in agency. लोगों को ये विश्वास ही नहीं है कि हम अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, अपनी एकजुट से कुछ बदलाव वाकई ला सकते हैं. तो ये मुझे लगता है ये बिलीफ जब तक के इंस्टिल नहीं होता है तब तक के बहुत बड़े पैमाने पे कोई चेंज मुनासिब नहीं है, बिकॉज देन एवरीबडी इज वेटिंग फॉर समबडी एल्स टू कम एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम. सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल. Can we have the next question, please? I have a question towards Satyajit sir. Yeah, go ahead. Go ahead. I am Rishikesh Kulkarni, first year MIT SOG. I come from the Vidarbha region, so I understand this water problem quite acutely. There has been a remarkable progress, admittedly there, but unfortunately some stopgaps remain in the process. We are going to have UNFCCC COP30 in the coming November, and we also had one in the last, I think, May. There was a promise made by all the nations to mobilize 300 billion of funds towards climate change, but this is somewhat not translating into the national economies. There is a considerable lack in the international institutions and the national economies. The level of communication and transmission of those funds is not happening. So could you just elaborate where are the stopgaps in the institutional framework of, let's say, United Nations and all the organizations working towards the cause of climate change? So Rishikesh, certainly I am not competent to answer your question, but I'll try and comment on the zone in which you are in. So climate change, that's all right. Don't worry, I'll address it hopefully. Climate change is a species threatening problem. It doesn't threaten one country. It's not that climate change threatens India and doesn't threaten the US. No, it threatens all countries and all human beings in all parts of the world. Obviously, the impact is felt differently by different people based not only on geography, but on income, because the inequality becomes a huge factor in determining what you will have to face. But having said that, the fundamental problem is this, that it's a species level problem, and therefore the solution can only come if we feel emotionally that we are one species. Sadly, more than ever before, we are divided on multiple fronts. Countries are setting up barriers of various kinds, of tariffs being the most obvious one on everybody's mind now, but they are a reflection of mindset. So if the mindset is that we are not common stewards of this tiny planet Earth, but the mindset is that we are actually citizens of this country or that country, I don't think climate change can ever be tackled head on, because we will either succeed as a species in overcoming our petty differences and dealing in common, or I dare say that you can create any structures, any UNFCCs, any conventions, any amount of funding, and things are only going to go from bad to worse. So basically, sir, there needs to be a collective ownership about this particular cause. Yeah, collective emotional ownership that this is a species level problem. This is not a national problem. This is not a state problem. This is not a municipal problem. We are all in this, and we will either all swim or we will all sink. I don't think that human beings are even remotely there yet. If anything, we are moving further and further apart. Thank you. Glad to have you, sir. Thank you so much. We'll be entertaining one last question.
My question is for Ritu ma'am. I'm a student of School of Government. I've known your journey ma'am and you're one of the youngest female politicians in India. आपसे मेरा सवाल ये है, मेरे जैसे युवा महिलाओं को जो राजनीति में रुचि रखती है और राजनीति का हिस्सा बनना चाहती है, उन्हें क्या मार्गदर्शन करेगी और हमारे राजनीतिक लक्ष्य क्या होने चाहिए? हेलो, जैसे मैंने संबोधन के दौरान एक बात कही कि वो तमाम युवा, चाहे वो मातृशक्ति हो या पितृशक्ति हो, आप तमाम लोगों में वो सारे गुण हैं, वो तेज है, वो ऊर्जा है, वो बल है, वो अच्छे विचारों की शक्ति है। चूँकि जब हम लंच के दौरान बैठे थे तो मैम से मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए क्या चुनौतियां हैं, ख़ास तौर पे राजनीति के क्षेत्र में। तो मैंने उनसे कहा कि सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, महिलाओं के लिए तमाम उस क्षेत्र में जहाँ पे वो निकल कर आगे बढ़ना चाहती हैं, उन तमाम क्षेत्रों में महिलाओं के लिए चुनौतियां हैं। यदि जब आपको हो सकता है कि मेरा ये जवाब थोड़ा सा इसमें कड़वाहट हो, लेकिन इसमें सच्चाई भी है और इसको स्वीकार करना भी पड़ेगा। जब आपसे कोई ऊर्जा में, कोई बल में, कोई विचार में आपको पराजित नहीं कर पाएगा तो वो आपके चरित्र पर प्रहार करेगा, और उसके लिए मुझे लगता है आपको तैयार रहना चाहिए। और यदि आपके विचारों में वो शक्ति है तो सबसे पहले आपका जो द्वंद्व है वो आपसे ही है। यदि आपने खुद को हरा दिया तभी आप हार मानेंगे, और यदि आपके अंदर के कौतूहल से जीतने की क्षमता है तो वहीं से आपके नेतृत्व की शुरुआत होती है, और आप एक बेहतर नेतृत्वकर्ता बन के आप अपने परिवार का, समाज का और इस देश का भी नेतृत्व कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. With this, we come to the end of the question and answer round. And now to conclude this session, I invite Dr. Urvashi Makar ma'am to share her concluding remarks and present the vote of thanks. So well, what a session it was. Full of inspirations, such power-packed talks, the two individuals who have changed the landscape at their different levels. So kudos to these two great personalities which are present today. Let's have a huge round of applause for both of them first of all. My dear students, one thing has been proven by these two people, the stalwarts in their own spheres, that मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार, असल अधिकार है अपना। सपनों का अधिकार है, असल अधिकार अपना। तू माटी का लाल है, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। ये आप सबके लिए है। तू भोर का पहला तारा है, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। So my dear students, this session has been giving us so many inspiring stories, and I'm sure at the end of this engaging session, I have been given this honor and privilege to extend the sincere gratitude to not only these two speakers, but to the whole organizing committee, the teams, the students, and on top of it, our very dear convener, Dr. Ganesh ji. The whole lot of the teams have put the efforts while conceptualizing the idea of SLDP, and you might not be aware how much efforts, time, planning, strategies are going behind this session, and today it has become a reality.
Mr. Satyajit Ji Bhatkal, your journey from law to filmmaking and now to community mobilization through Pani Foundation has really shown us that leadership evolves with purpose. The way he has created the model of self-driven leadership in which the villagers took the ownership, that is something which is extraordinarily inspiring. And on second hand, Miss Ritu, one of the youngest Sarpanch in Chhattisgarh, at the age of 23, when she was elected as Sarpanch, and how she created a change in her sphere. So these two inspiring stories have been the witness, we all have been the witness to the great session. My dear students, once again, I thank you to all the speakers, the organizing team, and to each one of you for being part of this meaningful dialogue. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, ma'am. We now request our dignitaries and panelists to kindly gather in front of the stage for a group photograph, capturing this incredible moment of shared inspiration and learning. Ladies and gentlemen, can we please have a huge round of applause for all our dignitaries today? You all have been an amazing audience, ladies and gentlemen, and we look forward to welcoming you tomorrow for our next session, which will begin sharp at 8:30 a.m. We request you all to kindly be present at the Pandal at 8:30 a.m. sharp tomorrow. Kindly ensure you return to this exact venue at 8:30 a.m. tomorrow. Thank you so much for this engaged session. Let today's story be a reminder that leadership isn't always about grand gestures. It's about action rooted in community, courage, and care. We'll see you soon in the next session tomorrow. Until then, keep the spirit of change alive. Thank you. Hello.